Good morning, Namaskar. This is Suraj Singh, Faridabad, NCR, Bharat. Regarding our country, Bharat, SSSDR Bharat, India. Every day, something I talk to you in current situation, which is very significant to be talked of, because because you see, we are bound by Vandematram, which is very important part for us. Vandematram, which is our soul, you can say. Vandematram, Sujalam, Suflam, Sujalam, Sufalam, Malyaja, Shitalam, Sasat, Shamlam, Matram, Shubhra Jyotsanam, Pulakit Yaminim, Full Kusumit, Drumdal Shovinam, Subhasini, Sumdhur Bhashanam, Sugda, Sugda Vardhan Matram, and we know I salute thee, rich with thy hovering strain, bright with all shard gleams, cool with thy winds of delight, green fields, weaving mother of might, mother free. Glory of moonlight dreams over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trace, mother giver of ease, laughing low and sweet, mother I kissly feet, Vande Matram. Yes, we all we all know this. We all know this. Who hath said thou art weak in lands when swords flash out in millions' hands and millions' voices roar? Thy dreadful name from shore to shore with many strengths, who art mighty and stout, to thee I call mother and lord. Thou who saves, arise and save, to her I cry, whoever her foe drove. Back from plain and sea, and shook herself free. Well, Vande Matram is our right, it's our wealth, can say. No one can deny that fact, and we have to regard it. But we have to check also, are we living in a land which is ruled by Vande Matram, which is ruled by mother? If you see current situation in country as on today, 20th December 2019, we are a burning country. People are burning. Society is burning. God is least bothered. We people of this country, we say, we people of this country, yes, we say we people of this country. Is saying enough? Is saying enough that we people of this country? Is that something right, or we have to check it further? We people of this country, we say, that we people of this country, India, Bharat, are we just born for vote, for government or for people? Are we just born to vote all these criminal politicians in name of democracy? Do we know about the structural power of constitution of this country as given below, as I'm going to speak? Preambles of our constitution, that is SSSDR Bharat, India, sovereign, socialist, secular, democratic republic, Bharat, India. प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवाद संपन्न, पंथ निरपेक्ष संपन्न, लोकतंत्र संपन्न, गणतांत्रिक संपन्न, Bharat, India. And we people of this country having solemnly resolved to constitute this country into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expressions of belief, faith, and worship,
equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation, which was declared in Constituent Assembly on 26 November 1949. Is it working? Question is that, is it working? Where is working? You are not allowed to speak in 2019 against government. You are not allowed to demonstrate on roads. Police is arresting you, detaining you. Where is that? Where is that liberty? Where is that justice? Justice is sleeping for society. Economy has gone down and politics is playing role of robbers, criminals. Where is liberty of thought, expression, belief, faith and worship? And there is equality of status and opportunity. We have to find solution. We have to find where we are wrong, where this preamble has gone in hands of some politicians. How can we allow politicians to handle us like this? How? On what basis? Government of Bharat, India is not my honor. No one is honor of people. People are honor. We have to remember this. We are not their servants. We are not their slaves. But they are considering us their slaves. If I am not able to demonstrate, I am not able to speak, I am not able to say something, what does citizenship mean? And they are saying you prove your citizenship. Why should I prove my citizenship? If you go to Article 51A of Constitution of this country, found fundamental duties, and how many of us have been following these fundamental duties? Are leaders of various parties following these duties? It says duty of every citizen is to abide by Constitution. To abide by Constitution. Are we abiding by Constitution? Is Prime Minister abiding by Constitution? Is President abiding by Constitution? Questions are arising. Questions are arising. There is condemnation of Constitution. They are not abiding by Constitution. Respect ideals and institutions. Are we doing that? Institutions are disregarded. We are not accepting that, but virtually we are accepting. Government is not abiding by Constitution. Constitution mandates that you have free speech. You are being arrested by police, even in capital. Where are we following Constitution? I think Constitution has been abrogated virtually, and politicians are constitutions. Is that wrong? And it says to cherish and follow noble ideals which inspired our national struggle. Our noble ideals were this, that no one is allowed public to speak, kill people, shoot them, confiscate their properties without any investigation, without any authority, confiscate their property. Is this noble ideal which inspired our national struggle for freedom? To uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, we are required to protect sovereignty, unity and integrity of India and not integrity of government. They want government to be integrated without any opposition. No, it's not possible. And like this, all duties are mentioned, which all you know, and if you do not know, read them. Article 51A of Constitution, which is duty of everyone, which says scientific temper is a must, humanity is a must, spirit of inquiry is a must, reform is a must, natural environment food is a must, heritage of a culture is a must, preserve it, safeguard public property and abjure violence. If the police is doing violence, who is responsible? If police does violence, who is responsible? Police violence means government violence. Government is not paid for that. MPs were not elected for that. MPs were elected to run this nation, administer this nation. But it's not happening. Who is responsible for that? Vande Matram we are saying, but we are not respecting Vande Matram.
We are not respecting our land. We are not respecting anything. Some of us are respecting politicians more than this nation. Some people are respecting politicians much more than the nation. As if politicians are gods. Are politicians gods? They are gods, you think? If you think they are gods, your mind is shut down. Your mind is locked. You are not able to think. No person is God in this world. They are like me and you. What I am and you are, same thing this. I am higher than those politicians because this election was conducted. They were elected because of our votes, and our votes is a gift from Constitution and not from these politicians. I elected them, I employed them as voter to work for me, and they are forcing me to go to jail. They are stopping me from speech. They're asking me not to stand here and there and demonstrate and go. You are in detention, you are in jail. This is happening everywhere. Public is not allowed to work as public, to speak as public. Prime ministers are above public. Ministers are above public. How it can happen? Vandematram doesn't say that. 51A fundamental duties do not say that. Preambles of Constitution do not say that. Now who says that? The police is all in all. Our Constitution doesn't say it's a police state, it's a police regime. Not at all, but virtually it's a police regime. Prime Minister lies from stage, Home Minister lies from state, government lies, Parliament lies, everybody is lying. What sort of country we have converted to in 2019? What type of country we are having in? Who's responsible for that? As a citizen of this country, I can openly say only government is responsible. Prime Minister is responsible. President is responsible. Both are responsible for this untoward incidents and towards this unbecoming situation, unacceptable situation in this country. It seems the country is burning. Public is on roads. Public who is political leaderless public. It's very beautiful situation now. It's public, self-leading public. No political leaders involved. Political leaders are coming later when public leads. And when public leads, no need of leader. No need of any leader because public itself is leader. Public is leading themselves. Public of all classes. Children, students, collegians, university guys, and job people, middle people, senior people, and all classes, all genders are on run. All are run to dispute something which has been done against Constitution of this country and for which our Parliament as whole and our government executive as whole are responsible. You cannot absolve them from this responsibility. Prime Minister and cabinet ministers are responsible for that, and all MPs in Parliament are responsible for that. They approved such thing, such a law without analysis, without any contemplation, without any thought, without any, you can say, detailed working on that, without doing homework on that. They did something which should not be done. If you go against Constitution, you go against yourself, you go against your nation, and you go against your souls and against public. And you are not supposed to go against public because you are serving public. Politicians and leaders are serving public. MPs have to serve public. Prime Minister has to serve public. President has to serve public. They cannot run away from service because they are in offices of Constitution and they are paid by public. They cannot run away from responsibility. Our Prime Minister, our President are not sitting just for signing and speaking. It is duty of President to review all acts before signing them. It is duty. We don't have any position in Constitution that mandates you just sign without understanding what you are signing. And we cannot expect, according to Constitution, our parliamentarians just
do nothing in parliament, and we don't expect our speakers just to accept anything without giving due weight to what is being approved by either house of parliament. They have done it. No one is responsible in this country. MPs are voting for something else. They are not voting for what's happening to people. No one is reading constitution in this country in parliament. No one is reading constitution. They are just doing themselves as if they are all our constitutions. Constitution is being abused. Constitution being thrashed. How long can we tolerate like this? Constitution is our soul. Constitution is our body. Constitution is Bharat. Constitution is India. You cannot touch constitution. Police works under constitution. Military works under constitution. Parliament works under constitution. President works under constitution. Courts work under constitution. And public is author of this constitution. Public works under constitution as well as public is responsible for constitution. And president is responsible to preserve constitution. Court is responsible to preserve constitution. And executive is responsible to execute it according to requirements. And parliament has to maintain its standards. But it seems everybody has run away from respective duties and responsibilities, and 51A article of Constitution has been turned into slush. Preambles have been fired. Constitution is flying in the air. What's happening to this nation? What happened to this nation which it got liberated from our cruel masters, British? Did we people work on this constitution for this day, today? What's happening? You are seeing, you are allowing this nation burn, public cry. It's public crying. It's not political leaders crying. No one can claim that it is political parties who are doing this. It's public. Political parties are trying to extract credit out of this revolution. You can call it a revolution. Revolution in India, Bharat, post 1947, non-political revolution. Revolution in 1977 was political revolution when Indira Gandhi was removed. But this revolution is exclusively non-political. When public does something, irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of something else, revolution is different. Public revolves, public moves, public speak, public chant. People are coming from all corners of nation into a congregation of demonstration, of revolution, and government is surprised actually, amazed actually, because they never ever expected such a state of revolutionary movement conducted by, projected by, forwarded by, initiated by, and centered by public of this country. Yes, there are people who are also coming in different direction, in opposite direction. There are people who are supporting government, parliament, and there are people who are revolving. But there is no question to support, because if you are supporting something, no need to protest, but you are protesting for what? 85% people are affected by something and 15% people are not affected by something because they are politically floated. That is political revolution. Those who are supporting something, CAA or NRC, what for they are supporting? Support. Who is stopping you? But why you are coming in roads when you are supporting something? When you are supporting something, welcome it. So what is meaning of coming in road? That is out of my question, understanding. This means you just want to encounter other people. 85% people are not supporting something, and you are saying stop your opposition and accept what I saying, what we are saying. No, that's not way. You are supporting, fine, welcome, it's your right. But when you support something, what's meaning of coming onto the road to display your supporting? This means you are politically motivated people. You are supporting by a certain political party. That's the only reason, no other reason. Public cannot be stopped from revolution. Public is revolving and intensifying every day. You use police force, you use military force, you do whatever atrocities you can cause to people.
People are accepting everything. People are sacrificing. Many have lost their lives. You can take whatever action you want. Public is not going to stop. You are proving that you are too weak. If a government acts against its people in a criminal way, causing atrocities onto them, not caring for them, not caring for school children, college children, that government is termed as too weak or weakest, irresponsive, weakest government, potential-less government, impotent government, you can say. There may be threats, they may be threatening on the internet to people, threat, no problem. It is public. When public starts speaking something, no force can stop it. Public is your appointee, political leaders and constitutional positions. Public is your honor. You may say something, who bothers? Don't forget this same public brought to where you are sitting. You are not sitting there because of your academical qualification or because of your professional experience. You are sitting there because this public extended their love and affection to you, and they trusted you, they brought to you to these positions they are sitting. And after having reached those positions, you have become too proud you have become. You have not achieved anything because of your own, because that position is free position. That is because of common man position. You have reached there, and you are now thinking public is your enemy. You are asking same people to prove that you are people of this country. It is really strange. What should we call such a state of a country where government is inclined to just revenge against its people? For what? If you cannot handle them, better go. And if you have caused some mistake, which we know you have caused some mistake, either correct mistake or leave position. It is in your interest to correct it now, before it's too late. There will be no fire extinguisher to extinguish fire spreading over country. It's spreading very rapidly spreading, and you are just watching as a spectator. And you are abusing police power. Police is not to support government, police to help people. A statute of police doesn't say you listen to what government is saying. You police people, you have to help the public. You have to listen to them. You act according to statute and constitution. You have no right to listen to what political leaders say. Your prerogative is yours. It's not political prerogative. And if you listen to these people who are political masters, then you have to respond later. It happens, history repeats itself. You did same thing in past as well. You did same thing during 1984 when 6 were killed. Now you are killing others. This is not acceptable. You may have power, but that power cannot be used against public. You support public, it is your interest. If minister says something, you will listen. It's not minister's ownership on constitution. It's not minister's ownership on statute of police. It's ownership of public. If you are causing such atrocities to people, you shall have to answer. You have no right to touch people without any crime. What crime they are doing? Demonstrate? Speaking against government? You think it's a crime? No. You are involving yourself in crime. Don't forget you are being paid by taxes. The same people whom you are arresting, whom you are detaining, you are getting salary from their taxes. It's not government is paying you, public is paying you. You have taken oath of constitution allegiance. You have taken oath that you will serve public of this country. You maintain law and order. Is this way of maintaining law and order just arrest people for nothing? For no crime offended by them? Can you arrest public like that? But you are arresting.
You are doing something against constitution, against statute, against public interest. This is not acceptable. You are doing actually a crime. Government is doing a crime. From top to bottom, government is doing crime. It's not really acceptable. Nobody shall accept you. You can harass people, you can beat them, you can shoot them. Yes, you can do that. It's called abuse of power, complete abuse of power. Constitution is not being applied with, it's being thrashed by you people. You are not doing work according to fundamental duties of citizen. You are not caring for preambles. You are not caring for anything. You are just going for your own sake. That is not acceptable. It's completely wrong. Vande-Matram is being thrashed. Bharat Mata is being thrashed. Preambles are being thrashed. Everything is thrashed. Country is being thrashed. It's only 72 years since it emerged, and we are in this state just because of something which has been done illegally. After what is a problem? Problem is government. Problem is parliament. Go and teach them lesson. Why are you teaching lesson of public? What public has done wrong? What crime public has done? My question to all police and government is, what crime public has done against government or against the nation? They are demanding something which right they got. Who are you to obstruct in that way? You can stop public from speeches, from demonstration? Never ever. You can suppress them. You can arrest them. How long? How many? Can you arrest 50 crore people? Can you arrest 90 crore people? What sort of stupidity you are showing towards public, towards nation? Public is public, it is free. Yes, there are pros and cons, there are merits and demerits. Some people are in support and some in opposition. Both are these. Those who are supporting this, shall you arrest them? Those people who are supporting these statutes, shall you arrest them? Arrest them also, because they are supporting it. Why don't you arrest them? Those who are opposing them, you arrest them? What equality is this? Arrest both. Arrest Prime Minister also. Arrest Home Minister also. Can you arrest them? You are doing completely nonsense activity. You have to stop it. You cannot act against public who are at right. Public is doing per constitutional provisions, per statutory provisions, we people provisions. Justice, equality, liberty. I explained to you before. हम भारत के लोग सत्य निष्ठा से ये फैसला लिया, ये कहा कि हम इस देश को, भारत को, इंडिया को एक ऐसे देश में बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, संगठित करते हैं, जिसके अंदर कह सकते हैं प्रभुसत्ता संपन्न हो, समाजवादी संपन्न हो, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष संपन्न हो, लोकतंत्र संपन्न हो, गणतंत्र संपन्न हो, और हम श्योरिटी देते हैं सबको, हम गारंटी देते हैं सबको कि आपको न्याय मिलेगा, बराबरी मिलेगी, अवसर मिलेंगे बराबरी के, स्वतंत्रता मिलेगी और ब्रदरहुड बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। ये हमारा संविधान हर व्यक्ति को जो इस भारत का नागरिक है अधिकार देता है, और वो अधिकार एब्सोल्यूट है, वो अधिकार परिपक्व है, ऑफ कोर्स कंडीशंस के साथ, लेकिन वो अधिकार हर व्यक्ति को है जो इस भारत का नागरिक है। और किसी पुलिस वाले की शक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी राजनीतिक नेता को शक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी अधिकारी को शक्ति नहीं होनी चाहिए कि उन अधिकारों को छीने या उन पे डंडा बरसाए, उन पे अपनी शक्ति से उनको गिरफ्तार करे। ये अधिकारों के खिलाफ है। हर एक व्यक्ति को भारत के बोलने का अधिकार है, अपने मन की इच्छा, अपने मन की बात, अपने दिमाग की बात कहने का अधिकार है। ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये पब्लिक ने स्वयं को दिया है। सरकार ने नहीं दिया पब्लिक को, कोर्ट ने नहीं दिया पब्लिक को, पुलिस ने नहीं दिया पब्लिक को, उल्टा पब्लिक ने ही इनको अधिकार दिए हैं। पब्लिक ने ही संसद को अधिकार दिया है, पब्लिक ने ही
न्यायालय को अधिकार दिया है, और पब्लिक ने ही सरकार को अधिकार दिया है, और पब्लिक ने ही राष्ट्रपति को अधिकार दिया है। इनमें से किसी ने पब्लिक को अधिकार नहीं दिए। पब्लिक है वी पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो बनाया है पब्लिक ने बनाया है। पब्लिक ने बनाया है, उस कमेटी की सपोर्ट से बनाया है जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम की, अध्यक्षता में काम की। इसलिए इन सभी को कोई बात नहीं, कोई अधिकार नहीं कि पब्लिक के अधिकार को छीन सके। आप देश विरोधी काम कर रहे हैं, आप पब्लिक विरोधी काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो या मिनिस्टर हो या कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, सबको कह रहा हूं, आप देश के हित में काम नहीं कर रहे। आप जबान बंद करना चाहते हैं, आप पैरों को चलना रोकना चाहते हैं, आप विरोध बंद करना चाहते हैं, मत भूलना ये बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को और पुलिस को भी। आप पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे, कितना आप कर लेंगे? गोली मार देंगे, शूट कर देंगे, फांसी लगा देंगे, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? पब्लिक को बोलने से रोक रहे हैं आप। पब्लिक ही आपको पैसे देती है, उन्हीं का पैसे से आप रोटी खाते हैं, और उन्हें क्या 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 जुर्म है पब्लिक का, बताइए। खून किया पब्लिक ने, क्या किया पब्लिक ने? बोलना चाहते हैं बोलने दीजिए, आपका क्या जाता है? वो बोलेंगे आपके रोकने से, आपके पकड़ने से तो और भड़केंगे, आप भड़काइए उनको। कौन पूछता है राष्ट्रपति की बात को, कौन पूछता है प्रधानमंत्री की बात को? जब पब्लिक सामने खड़ी हो तो ना प्रधानमंत्री की वैल्यू होती है, ना राष्ट्रपति की वैल्यू होती है, ना संसद की वैल्यू होती है, किसी की वैल्यू नहीं होती जब पब्लिक सामने होती है। पब्लिक से बड़ा कोई राष्ट्रपति नहीं, पब्लिक से बड़ा कोई न्यायालय नहीं, पब्लिक से बड़ी कोई पार्लियामेंट नहीं, और पब्लिक से बड़ी कोई सरकार नहीं। पब्लिक ही सब है। जनता जनार्दन होती है, जनता के सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई कितनी भी बड़ी शक्ति लेके क्यों ना बैठा हो इस देश में, क्योंकि सबको पब्लिक ने बनाया है। पब्लिक को लोग, इनमें से किसी ने नहीं बनाया। प्रधानमंत्री भी सीट पे पब्लिक की वजह से है, एमपीज भी सीट पे पब्लिक की वजह से है, राष्ट्रपति भी सीट पे पब्लिक की वजह से है, सरकार भी पब्लिक की वजह से है, और न्यायालय भी पब्लिक की वजह से है। अपने आप नहीं आए वो इन पोस्ट पर, इसलिए उनको पब्लिक की तो सुनना ही पड़ेगा, और नहीं सुनोगे तो फिर देश की हालत अच्छी नहीं हो सकती। पब्लिक डिस्टर्ब हो गई एक बार तो बड़े से बड़ी शक्ति उसको संभाल नहीं सकती। चला लीजिए तोपे, चला लीजिए बंदूक, चला लीजिए कुछ भी, कुछ नहीं होने वाला। जितनी चलाओगे पब्लिक उतनी और भड़केगी। एक बार पब्लिक अगर भड़क जाती है तो याद रख लेना, फिर उसको संभालना मुश्किल नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी शक्तियां फिर हो जाती हैं। बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हैं, आप कहां तक भागोगे? जरा जरा से देश में नहीं संभाल पा रहे, हांगकांग में वो नहीं संभाल पा रहे, लेबनान में नहीं संभाल पा रहे, लीबिया नहीं संभाल पा रहे, इराक नहीं संभाल पा रहे, आप क्या संभालेंगे? आप हो कौन? पब्लिक ने आपको 5 वर्ष के लिए क्या बिठा दिया? आप समझने लगे हम पब्लिक के मालिक हैं। कोई मालिक नहीं है यहाँ, मालिक तो पब्लिक ही है। आप ही को बिठाने वालों को आप कह रहे हैं अपनी नागरिकता प्रूव करो। आपकी नागरिकता कौन प्रूव करेगा? अगर पब्लिक को नागरिकता प्रूव करनी तो पहले आप नीचे आ जाइए सीट से, छोड़ दीजिए सीटों को। जब नागरिकता प्रूव पब्लिक कर देगी तब आना सीटों पे, क्योंकि पब्लिक ने तो आपको चुना नहीं, वो तो नागरिक नहीं है यहाँ की। बार बार कहना पड़ेगा इस बात को, समझाना पड़ेगा उन लोगों को जो समझते नहीं है, इस बात को समझना नहीं चाहते, वो जानते नहीं है हम क्या कहना चाहते। वंदे मातरम गाने गाते रहो, वंदे मातरम को समझो नहीं। देश की जमीन को खूनम खून कर दो, नागरिकों को मार दो, अधिकार छीन लो, फिर कहो वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता के बच्चों को मार दो, फिर कहो भारत माता की जय। अरे विद्यार्थियों को मारो, बच्चों को मारो, लोगों को मारो, सबको मारो, धर्म के नाम पे मारो। ये कौन सा संविधान है? आप क्यों धर्म बीच में लाना चाहते हैं? क्या मतलब है धर्म का? धर्म किसे कहते हैं? क्यों धर्म को बीच में लाते हैं आप? जरूरत क्या है देश के अंदर धर्म की? जो करेगा अपने लिए करेगा धर्म, आपको क्या मतलब है? आपको क्या लेना है धर्म से? मेरा प्रश्न है। धर्म एक व्यक्तिगत होता है, धर्म देश का नहीं होता है। हमारे देश की सरकार धर्म की नहीं है, हमारे देश का संविधान धर्म का नहीं है, हमारे नियम कानून धर्म के नहीं है, हमारा न्यायालय धर्म का नहीं है। जब कोई धर्म का है नहीं तो आपको धर्म की क्या चिंता पड़ी है? आप होते कौन है बोलने वाले? आपको किसने अधिकार दिया? ये क्या संविधान ने अधिकार दिया है आपको? धर्म स्वतंत्र है, धर्म प्रति व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी की कोई इच्छा वो कुछ भी करे, पब्लिक के अंदर कोई कुछ भी करे। आपको क्या इच्छा है? संविधान कहाँ कहता है कि आप ऐसे काम करेंगे या धर्म बीच में आए? हमारे संविधान में प्रेमबल में कहीं नहीं लिखा कि धर्म कुछ होता है।
किसी भी संविधान के अनुच्छेद में कहीं नहीं लिखा 395 में धर्म कुछ होता है किसी और वजह से होते हैं, नियम कानून होते हैं, वहां डिफाइन किया जाता है कि इस पर्पस के लिए बना है। जैसे हिंदू को डिफाइन किया हिंदू मैरिज एक्ट में कि धर्म का इस पर्पस के लिए है, शादी और तलाक के लिए है, इसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उस पर्पस के लिए होते हैं। यहाँ तो आपने दूसरा ही पर्पस बना दिया, दूसरी मंजिल तैयार कर दी धर्म के लिए। धर्म कहाँ तक जाएगा आपके साथ, आप सोच लीजिए। ये देश धर्म से नहीं बना और ना ही धर्म से टूटने वाला है। ये देश है, इस देश का धर्म भारत है, इस देश का धर्म भारत का संविधान है, इस देश का धर्म आत्मा है, इस देश का धर्म परमात्मा है, इस देश का धर्म वंदे मातरम है, इस देश का धर्म भारत माता है, इस देश का धर्म मानवता है, इस देश का नाम ह्यूमैनिटी है। ये देश का नाम भारत है, भारत ही भारत है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। ये देश किसी दूसरे धर्म का नहीं है, इसका एक ही धर्म है, सच। सत्यमेव जयते, सत्य ही यहाँ का धर्म है। सत्यमेव जयते इसीलिए कहा जाता है, जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, जहाँ झूठ है वहाँ अधर्म है। अगर आप बात बात पे झूठ बोलते हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री पद पे क्यों ना बैठे हो, वो अधर्म है। अगर हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, जो कि वो बोल रहा है, इसमें कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं रह गई है, सबूत सर्वविदित हैं, तो इसको अधर्म कहते हैं। धर्म और अधर्म दो चीजें हैं। तो हम अधर्म को नहीं चलना चाहते, हम धर्म पे चलना चाहते हैं। अधर्म पे चलेंगे तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। पब्लिक को संभाल लो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, और अपनी नीतियों को चेंज करके देश के बारे में सोचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो 1947 के बाद जो हुआ, रास्ता तय किया, वो सारा खराब हो जाएगा। और जो हमें शक्ति दी थी भारत को आज़ादी के कानून ने, आज़ादी के नियम ने, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, उसके बारे में जो भी हुआ उसके बाद वो अच्छा नहीं होगा। ये राजनीति वालों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, चाहे वो सत्ता के हों चाहे वो विरोध के हों। जनता ना सत्ता की है, जनता ना विरोध की है, जनता जनता है। भारत की जनता सच जानना चाहती है, सच करना चाहती है, सच पे चलना चाहती है। 2-4% लोग करप्ट होंगे, भ्रष्ट होंगे, देशद्रोही होंगे, लेकिन 98% लोग ईमानदारी से चलना चाहते हैं, शांति से चलना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो धर्म के नाम पे युद्ध नहीं चाहते। धर्म तो युद्ध करता है, धर्म से तो युद्ध ही होते रहते हैं, उनकी समाप्ति कभी नहीं होती। कभी धर्म के युद्ध नुकसान ही देते हैं, और हम धर्म का युद्ध नहीं चाहते, हम मानवता चाहते हैं। हमारे लिए ना हिंदू कोई चीज रखता है, ना मुसलमान कोई चीज रखता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा है मानवता। हमें सबको जीना है शांति से, रोटी खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। एक तरफ तो आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। क्या होता है विश्व गुरु? आप विश्व के साथ चलना भी नहीं चाहते तो आप गुरु की बात करते हैं। आप उनके साथ चल नहीं सकते, उनकी बात मान नहीं सकते, मानवता की वैल्यू दे नहीं सकते। आप बच्चों को मारना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे विद्यार्थी वर्ग को मारना चाहते हैं, आप एक मानव को जो शांति प्रिय उसको मारना चाहते हैं, आप उसको बोलने नहीं देना चाहते, उसके ऊपर पुलिस बैठाते हैं, और फिर आप कहते हैं आप विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे ही चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, ऐसे ही किताबें पढ़ाएंगे आप लोगों को। यही विश्व गुरु होता है? पुलिस के डंडे से धो के पिटाई करा दो, लोगों के प्रॉपर्टी छीनने की धमकियां दे दो, लोगों के हाथ पैर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, लोगों के घरों में उसके सामान लूट लो, उनको पीट दो। यही विश्व गुरु अध्याय है? ये कौन सा विश्व गुरु है? मेरी तो समझ नहीं आ रहा। ये विश्व राक्षस गुरु है या कौन सा गुरु है? ये तो राक्षस ऐसे काम करते हैं, असुर ऐसे काम करते हैं, गुरु तो ऐसे काम नहीं करते। फिर आप कौन से गुरु की बात करते हैं? बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे सरकार जो बनाई 2014 में, लोगों ने किस विश्वास से बनाई थी? क्या सोचा था कि चलो एक भ्रष्ट सरकार गई पिछले वाली, उसको भ्रष्ट कहा जाता था। ठीक है, नहीं थी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई उसका अभी तक सबूत नहीं मिला है, लेकिन लोगों ने शांति चाही थी,
लोगों ने विश्वास किया था कि चलो एक नया चेहरा, एक नई पार्टी, एक पार्टी जो अपने स्टैंडर्ड पे चलती है, अपने मानकों पे चलती है, एक पार्टी जो एक अलग है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसका ईमानदार है, जिसकी छवि वो देश को आगे ले जाएगा। विश्वास किया था लोगों ने, लेकिन वो ऐसा लेके जाएगा कि धर्मों के नाम पे पब्लिक में लड़ाई कराएगा, ये नहीं सोचा था। जबकि लोगों को शक तो था कि इनकी सोच वही है, इनके प्रोग्राम वही है। वो बात सामने आ गई, खुले रूप से आ गई। आज भारत की पैरामीटर्स, भारत की अपनी जो फार्मूले हैं, जो प्रिंसिपल्स और सिद्धांत हैं, उनको तहस महस किया जा रहा है। पुलिस पब्लिक को पकड़ रही है बिना किसी मतलब के, बताइए। इसलिए आपको लोगों ने सीट पे लाए थे, आपके लोगों को जिताया था एमपीस को, ताकि आप प्रधानमंत्री बन सके। इसीलिए सिखाया था, इसीलिए लाए थे। यही पर्पस था लाने का क्या, कि बाकी जो समस्याएं हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे देश की, उनको तो फेंक दिया जाए। लोगों की शिक्षा कैसी हो, लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो, लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों का, देश का कैसे आगे तरक्की की जाए, प्रगति की जाए, वो बातें तो छोड़ दो। इन बातों को लेके बैठ जाओ, जिन बातों से पीछे ही हटना है देश को। आज समाज इतना बेवकूफ नहीं रहा कि आपकी मनुष्य संस्कृति को मानेगा, आपके ब्राह्मणवाद को मानेगा। ये आपकी कल्पनाएं हैं, ये कल्पना है, एक मिथ्या है। अरे कौन ब्राह्मण और कौन बनिया, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही कराएंगे आप। कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता और कोई बनिया भी पैदा नहीं होता और कोई सफाई कर्मचारी भी पैदा नहीं होता। अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं लोग। और ये मनुवाद की बीमारी अपने पास रखी है आप। पब्लिक को इसकी आवश्यकता नहीं है। पब्लिक को तो मानववाद की आवश्यकता है। पब्लिक को तो मानवता देखनी है, मनुवाद नहीं, मानववाद। एक भ्रम में ना रहो, ना रखो पब्लिक को। आप रहिए, भ्रम में रहना चाहते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन पब्लिक भ्रम में नहीं रह सकती। पब्लिक समझदार हो चुकी है। कुछ समय से सो रही थी, कुछ सालों से, जब से आप आए थे शायद तब सो रही थी पब्लिक। कोई बात नहीं, सोते रहने दो, शायद थक गई थी, आराम कर रही थी। लेकिन आपने ऐसा एक दानव छोड़ दिया, वो दानव पब्लिक में फैल गया और पब्लिक ने उस दानव को पकड़ लिया। और उस दानव का नाम है CAA+NRC और जो भी दूसरा है। वो दानव पब्लिक के हाथ में आ चुका है और पब्लिक उस दानव को पकड़ कर बैठी है। आपसे पब्लिक ने छीन लिया है। आपने उस दानव को पैदा किया और आप दानव के पापा हैं। वो दानव आज पब्लिक के हाथ में है और पब्लिक उसके हाथ पैर काट के, उस दानव के, उसका एक एक हिस्सा काट के खत्म करेगी। आप देखते रहना, देखते रहना। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि देश की पब्लिक पार्लियामेंट से ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। पब्लिक अगर नहीं चाहती तो नहीं चाहती। पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस भी पब्लिक का ही हिस्सा है। हो सकता है पुलिस को आपने धमकियां दी हो, पुलिस बेचारी डर गई हो, क्योंकि वो पुलिस है, वो नहीं चाहती कि उनको तंग किया जाए। पुलिस आपके कहने से पब्लिक के ऊपर आज अन्याय कर रही है, लेकिन वो भी कब तक करेगी? आखिर वो भी तो पब्लिक का हिस्सा है। एक समय आएगा कि वो भी नहीं करेगी। कोई किसी का गुलाम नहीं है, बेशक पुलिस का भी क्यों ना हो। इसलिए गुलाम तो स्वयं आप हैं, जिनको भाग्य ने सीटें दे दी, बड़ी बड़ी देश का नेता बना दिया। वो ये हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद वो उसके काबिल नहीं। अगर उसके काबिल होते तो इस बात को समझते, सोचते, ध्यान देते कि आखिर हमने ये पाया है, देश की जनता की सेवा के लिए पाया है, देश की जनता को तंग करने के लिए नहीं पाया। देश की जनता ऐसे नेता को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो उनको बार बार तंग करे, बार बार तंग करे। एक बार तंग हो गया, गलती हो गई, मान लिया, चलो नेता है, अच्छे के लिए सोचा था इन्होंने, लेकिन गलत हो गया होगा किसी वजह से,
कुछ नहीं कहती जनता, चलो एक चांस और दे दो। लेकिन आपको तो चांस पे चांस मिल रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझते हैं कि पब्लिक पागल है, क्या है, वो समझती ही नहीं है। पब्लिक सब समझती है। आप जब से आए और जब आज 2019 5 साढ़े 5 वर्ष बीत गए, मैं तो ये देख रहा हूं, हालांकि मैंने भी आपका समर्थन किया 2014 में, आपकी पार्टी को वोट दिया, सोचा चलो शायद एक चांस दे देते हैं इनको भी। कांग्रेस ने गलत किया होगा, कांग्रेस ने भ्रष्ट रही होगी, देखते हैं ये क्या करेंगे। नहीं करेंगे तो छुट्टी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लोकतंत्र है, गणतंत्र है, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, सरकार कोई बनेगी नहीं बनेगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक मौका दिया, अवसर दिया पब्लिक ने 2014 में, ये सोचकर कि भारत का भाग्य बनेगा। भारत के भाग्य बनने में आप पब्लिक को अपना सहयोग देंगे, लेकिन भाग्य विधाता तो ना बन सके आप, ना पब्लिक को बनने दिया। भाग्य ध्वस्त जरूर हो रहा है, भाग्य टूट जरूर रहा है लोगों का। भाग्य लोगों का टूट रहा है सिर्फ आपके कारण, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं उससे पहले ना तो होमवर्क करते हैं, ना सोचते हैं कि उसका क्या अंतजाम होगा, उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, प्लस माइनस में क्या हो सकता है, ये आप सोचते नहीं। और यही आपकी बहुत खूबी है कि आप एक ऐसी डायरेक्शन में बिना सोचे चल देते हैं, चाहे वह रास्ता दिखे या ना दिखे। और इसे ही कहते हैं मंदबुद्धि, इसे ही कहते हैं दिमाग से ढीले, दिमाग से पैदल। जब आदमी सोच समझ के काम ना करे तो उसका ऐसा ही नाम दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हो। आपके एक एक्शन गलत हो जाए तो दूसरा सही होना चाहिए था, चलो गलती हो गई पहले में, दूसरा गलत हो गया तो तीसरा सही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो सही आपका कुछ भी नहीं हुआ, जो आपने काम किए सारे ही गलत हो रहे हैं। पब्लिक ने सहा, बहुत सहा, पब्लिक ने डीमोनेटाइजेशन सहा, सह गए, कोई बात नहीं है, साथ दे देते हैं इनका। जीएसटी को भी सह लिया, कोई बात नहीं है, सब गिरता गया और गिर रहा है। अर्थव्यवस्था भाड़ में गई, जल गई, भट्टी में बैठी है, आपको चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं आपको। आपने पता नहीं क्या क्या अन्याय की, जम्मू कश्मीर पे आपने अन्याय किया, पब्लिक कुछ नहीं बोली। लेकिन हर समय पब्लिक आपका साथ दे ये जरूरी नहीं है। पब्लिक पब्लिक है, पब्लिक कोई राजनीति नहीं खेल रही है कुछ लोग खेलने दो, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, कौन पूछता है। लेकिन ज्यादा बड़ी पब्लिक आज सोच रही है कि उन्होंने वास्तव में क्या किया, इस पार्टी को लाके आखिर उन्होंने क्या पाया, सवाल तो उठेंगे। भक्ति वाले भक्ति करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मंदिरों में जेब कतरे भी जाते हैं, जूती उठाने वाले भी जाते हैं, जाते रहें। कारों के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहें, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन देश अब पागल नहीं बनेगा, देश अब बेवकूफ नहीं बनेगा। जितने मर्जी पुलिस वाले लगा दीजिए आप, कितना लगाएंगे, कितना लगाएंगे आप। 140 करोड़ जनता है, उसमें से 10-20 करोड़ आपके आदमी होंगे, आप निकाल दीजिए उसमें से 40 करोड़ निकाल दीजिए, 100 करोड़ फिर भी बचते हैं। 100 करोड़ जो आज आपके साथ नहीं खड़े। आपको समझ आना चाहिए, आप क्या समझते हैं, आप संभाल लेंगे। अगर आप समझते हैं तो आप स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, आपको हिसाब किताब नहीं आता, आपको लाभ हानि के सवाल नहीं आते, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे। अगर सोचते होते तो अब तक संभल जाते। ठीक है, आपने कानून पास कर दिया, नियम बना दिया, तो क्या मतलब है, नियम बनने के बाद हटते नहीं, आप सस्पेंड कर दीजिए उस लॉ को, डेफर कर दीजिए, बात खत्म हो गई है। आप जनता को डेफर क्यों कर रहे हैं, आप पब्लिक को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप पब्लिक के ऊपर निर्दयता का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। कांग्रेस ने किया था एक जमाने में 1984 में सिखों के ऊपर, आज भी वो चल रहा है। कहाँ 84 और कहाँ 19, आप देख लीजिए। 16 और 19 35 साल, 35 साल हो चुके उस कांड को, आज भी खत्म नहीं हुआ। और आपने जो किया गुजरात में, उसको भी 17 साल हो गए, आज तक खत्म नहीं हुआ। ये कभी खत्म नहीं होते, याद रख लेना। जो आप कर रहे हैं, अभी भी आपको होश में आना चाहिए।
देश के निर्माता नहीं हैं आप, देश का भविष्य नहीं है आप, देश के भगवान नहीं है आप। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये सच है। आपको देश ने एक अवसर दिया, उस अवसर को आपने खराब किया। आपको देश ने दोबारा अवसर किया, उसमें भी आप खराब कर रहे हैं। We are people of this country. We are not slave of this country. Remember, Prime Minister, and remember all others, including President of this country, and also courts of this country. We don't want this triangle. We want separate lines. We want line of government, we want line of parliament, and we want line of court. We don't want that triangle. No. We want independence of all these. We are not slaves of parliament. We are not slaves of executive. And we are also not slaves of judiciary. We are independent people. We are owned people. We are constituted people. We are constitutional people. We are our own economy. We are our own society. We are united individuals in this country. 140 crore people are individually united, and then overall united by constitutional integrity. This is our status. Least bother about who's prime minister, who shall be prime minister. That's not my concern. My concern, state of this country, state of what's happening in this country currently is against the interest of this nation, against the future of this nation. We cannot allow ourselves to burn ourselves. Country is burning. No fire extinguisher, no fire tender, no water to extinguish that. And this credit and debit goes to government of this country, parliament of this country. All parliamentarians are responsible for this. Lok Sabha members, Rajya Sabha members, President of India, which is called parliament in combination. Lok Sabha plus Rajya Sabha President is called parliament. Parliament is responsible and executive is responsible. Both are responsible to destroy public tranquility, public harmony. They are responsible for that. Public has been suffering. Atrocities are being attacked to public. Public is being arrested, detained for none of their offense. Everybody's right to express, demonstrate, speak against or in favor of government, and they are doing. There's one section, bigger section is protesting this act, whereas there's another section which is supporting this. I can't understand what's the meaning of coming on to work. Support something, keep supporting is going to stop you. No one is going to stop you. You're just showing that you are with this. Be this, no problem at all to someone. What's the meaning of objective of that? People are coming on roads, they are protesting. That's the reason they're coming on road, to show that they're protesting. But you are in support of that. It's your right to support. It's your right to do something. Do it, but not politically, socially. If you're doing some political backing, people are not backed politically these days, because all people hate political parties. It was duty of opposition parties to come with full force, but they failed to come. They failed to come always, everywhere they failed to come. People failed against Jammu and Kashmir. People allowed atrocities on them. Now they are realizing what offending is. Government offended GMK. Government offended our public. Government offended demonetization. Government offended GST. Offense and offense and offense. Now we can say all the offenses. Why should we tolerate offenses by government? Government has to do its job per constitution, per statutory process, but they are not doing this. They are interested in divisions, dividing people. I'm not talking about people's religions, Hindu, Muslims, all are people there. You cannot change it. It's a fact of life. If you take it in the way you're taken, you are at fault. Constitution is not bound by any religious name. Constitution is secular. Secular. Our democracy is based on secular, socialist status, and sovereign status, and republic status. You have to understand these meanings first before you opt for something else. You are going to claim that you are going to world teacher. Yes, you will be world teacher. You will be world professor. But first you have to see what's your syllabus. What's your program? Do you have any syllabus in that? Do you have any program that's status of what's professor, Vishwaguru? You know program at all. So what for you will say, you learners, you learn from us, we have Vishwaguru, we are a world teacher. What shall you teach them? Police atrocities,
People offending you and you offending people. This will teach them. Common people are on roads. Common people. They're not millionaires. Ordinary people. Very low class people. Middle class people. Other people are there. All ages and all genders. They are on roads. Students, non-students, laborers, workers, middle class, officers, professors, professionals. They have been on road. Are they free to come to road? Are they fools? What do you say? Are they fools? Everywhere, all over this country, people are on roads against government, not actually government, against the statute. Why don't you listen to them? What rigidity is there that stops you? Why are you so rigid? You cannot win people. You can win people by cooperation, by listening to them, and not by saying, no, I am standing like rock. Stand like rock. Stand like rock. Don't forget, rock can also slide. Landslide. You want to see landslide? Arrest people. Detain them. Be happy. But land is going to slide. Landslides are what you do. If land slides, you shall also slide. Remember, public, Janta, Bharat ki Janta, they know everything. Once they come on road, Indira Gandhi is removed. Once they come on road, Indira Gandhi is brought back. Remember, public cannot be defied with. Yes, public can be suppressed, but cannot be removed, cannot be killed. You can kill how many? How many people can you kill? 140 crores you can kill? Have better sense. When one side is one person as prime minister and other side is 140 crore people, who is powerful? You are prime minister because of parliament, MPs, and MPs are because of people. So how can you do your way? Yes, you are authorized to enact laws, but don't forget, implementation of laws and acceptance of laws is in the hands of people. Because you use your delegated power to enact law, but people are there to use absolute power, not delegated power. You are attorney of public, and public is not your attorney. Public is public. If public doesn't accept any law, no force on earth can implement that law. So, have some understanding, use your mind, use your analytical skill, and then act accordingly. Sometimes withdrawal of something is more significant than pressing that be implemented. It's right time. You understand, use your mind, use your diplomatic skill, and bring back lost harmonious state of this nation. We have lost harmony. We have lost tranquility. People are in turbulence environment. Politically, turbulence is coming in. You can say peace is going off and undue rest is coming. Unrest is coming. Your caused is unrest because of your ill thoughts. Public shall not respond like this. Public keeps moving with peace that they are moving. And they are not going to accept what you impose them, what you force them to be accepted. I am not politician. I am not attached to any political party. I am like all people on roads. I am just cooperating all who are cooperating this country. Country needs people, not political leaders. Remember, political leaders are elected, but people are not elected. People are permanent, regular. They cannot be defied with. It's up to people what they want to do.
what they want to see this country for. There may be 10% your supporters, 20% keep your supporters with you. There's no question of supporter, no supporter. We are your supporter because we brought to you power. Of course we are supporters, but that supporter must be respected. We supported you for nation, not for yourself, not for others. We supported you for development of this nation. We support you for education, for healthcare, for economy, for strength of nation, and for farmers, and for development, physical development. We supported you for that. You forgot how. Why did you forget else? You have to keep in mind, if you cannot remember, you have to keep some secretary with you who can remember, who can remind from time to time, daily, every day. But you think that you need not all this. People trusted you, you know that. People trusted you. But did you prove that trust which people allowed you? You did not feel that trust. आप पे लोगों ने जान छिड़की थी, आप पे लोगों ने विश्वास कहा था, आपकी वजह से लोगों ने पिछली सरकार को लात मार के भगाया था कि वो सरकार चोर है, लुच्ची है, लफंगी है, बदमाश है, देश को लूट के खा गई। आपकी बातों को लोगों ने विश्वास किया था। उसी विश्वास को जीतते हुए, उसी विश्वास को मन में, दिमाग में रखते हुए लोग आपको सत्ता में लाए थे। आप सत्ता में आ गए थे, अभी भी हैं, पहली बार, दूसरी बार आप आ गए। लेकिन अब आप क्या जान रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं तो चांस मिल गया दोबारा, जो मैं चाहता हूं मैं वो करूंगा। आपके चाहने से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा पब्लिक के चाहने से, संविधान के चाहने से। जो संविधान को नहीं मानेगा उसको संविधान लात मार के भगा देगा। याद रख लेना, संविधान तो शक्तिशाली है, वो एक किताब नहीं है। हमारा संविधान एक किताब नहीं है, पेजों पे लिखे आर्टिकल नहीं है। हमारा संविधान इस देश की आत्मा है। ये संविधान नहीं भी होता तब भी लोग ऐसे ही करते हैं। संविधान है तो एक डायरेक्शन है, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता आपका रास्ते से अलग है। जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं वो रास्ता संविधान का नहीं है। हम किसी हिंदू रास्ते पे नहीं चलना चाहते, हम किसी मुस्लिम रास्ते पे नहीं चलना चाहते, हम किसी सिख या किसी और रास्ते पे नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं भारत के रास्ते पे चलना, भारत के संविधान के रास्ते पे चलना, वंदे मातरम के रास्ते पे चलना, भारत माता की जय के रास्ते पे चलना और भगवान के रास्ते पे चलना। हम किसी और रास्ते पे नहीं जाना चाहते। हमारा रास्ता आज की तारीख में संविधान है, भारत का संविधान, जो हमें दिशा देता है, जो हमें मंजिल बताता है, जो हमें कहता है कि आपको ऐसे जीना चाहिए, आपको ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, आपको न्याय का प्रतिक्रिया का, कानून की प्रतिक्रिया का इज्जत करनी चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यही भारत के लोग चाहते हैं। आज आपने जो सोचा था कि हम हिंदू मुसलमान में युद्ध करा देंगे, फ्रिक्शन डाल देंगे, आपस में लड़ाई करा देंगे, कितनी गंदी सोच है। सोचिए, आप एक इतने उच्च पद पे बैठे, भगवान ने आपको अवसर दिया पब्लिक के थ्रू, आप कहाँ को बैठा दिया कि आप 140 करोड़ लोगों का जीवन सुधारेंगे, उनका भाग्य सुधारेंगे। आपको भारत भाग्य विधाता माना, खुद भारत के लोगों ने माना, जो भारत के लोग खुद भारत भाग्य विधाता है, उसने आपको अथॉरिटी दी, पावर दी कि जाइए हमारे भाग्य बनाने में हमारा सहयोग कीजिए, काम कीजिए। वो सब करने के बजाय आप अपने ही दुनिया में चले गए। आप क्या चाहते हैं आप शायद स्वयं ही नहीं जानते। पहली बात चाहती है भारत की पब्लिक की शांति से जिए। भारत के क्षेत्र में, भारत के इस देश के अंदर कोई धर्म मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदत है सबको साथ रहने की। और ये आज से नहीं है, हजारों साल से है। कोई मुसलमान है अपने लिए है, कोई सिख है तो अपने लिए है, और कोई को भी अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। मैं क्या पूजा करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता हूँ, या मैं चर्च में सर्विस करता हूँ, कुछ भी मैं करता हूँ, मैं अपने देश के लिए नहीं करता, वो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करता हूँ। लेकिन जब मैं घर से बाहर होता हूँ, जब पब्लिक में होता हूँ, जब देश के लिए कार्य कर रहा होता हूँ, अपना जॉब कर रहा होता हूँ, अपनी मंजिल डिसाइड कर रहा होता हूँ, आगे के बारे में सोच रहा होता हूँ, तो मैं देश के लिए सोच रहा होता हूँ। उस समय मेरी पूजा पाठ का कोई मतलब वहां नहीं रह जाता है। ये मन में साफ कर लेना चाहिए, दिमाग में साफ करना चाहिए। हम पढ़ाई नहीं करते धर्म की, हम पढ़ाई करते हैं ज्ञान विज्ञान के लिए। आज धर्म की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि वो एक कल्पना है। कोई भी धर्म एक कल्पना है, मैं इसको एक कल्पना मानता हूँ, इमेजिनेशन मानता हूँ। कोई कुछ भी माने, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो स्वयं ही कहते हैं मिथोलॉजी है, तो मिथोलॉजी क्या होती है? मिथोलॉजी कल्पना होती है, मिथ है जो सच है नहीं वो मिथ है।
हम लोग मिथोलॉजी बोलते हैं, आप सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं आप? या तो आप उसको हिस्ट्री बोलिए, आप बताइए जो आप बोल रहे हैं उसका प्रूफ दीजिए। वो सबूत भी आपके पास नहीं है, तो आप स्वयं उसको, मिथोलॉजी का मतलब होता है एक भ्रमजाल, आप स्वयं भ्रमजाल जिसको कह रहे हैं और उसकी पूजा आप कर रहे हैं। या तो उसको भ्रमजाल मत कहिए, उसको वास्तविक जीवन कहिए, उसको ज्ञान सागर कहिए, उसको विज्ञान सागर कहिए, कुछ भी कहिए, हम मान लेंगे। लेकिन नहीं, आप वो भी नहीं कहते। मिथोलॉजी है जी, ठीक है, आप रखिए मिथोलॉजी को, हमें क्या करना है मिथोलॉजी से? हमें तो आगे बढ़ना है, इसलिए हमें धर्म को पीछे रखना है, ताले के अंदर बंद रखना है। जब शाम को आएंगे ताला खोल लीजिए घर में। लेकिन जहाँ देश हमारा घर है, जहाँ सड़क हमारी घर है, जहाँ खुला हमारा घर है, हर जमीन हमारी घर है, हर गांव शहर गली कूचा सब हमारा घर है, हर खेत हमारा घर है, वहां पे धर्म नहीं चलेगा। वहां पे कर्म धर्म चलेगा, ज्ञान विज्ञान धर्म चलेगा, वहां पे हमारा काम धर्म चलेगा, हमारी सत्य धर्म चलेगी, हमारी मेहनत धर्म चलेगी, हमारा पसीना धर्म चलेगा, सब कुछ धर्म चलेगा। हेरा फेरी धर्म नहीं चलेगी, बेईमानी धर्म नहीं चलेगी, और धर्म की लड़ाई धर्म नहीं चलेगी। वहां मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, गुरुद्वारा नहीं चलेगा। वहां चलेगा तो हमारा कर्म चलेगा, हमारी मेहनत चलेगी, हमारी बुद्धि चलेगी और हम चलेंगे। यही देश का मतलब होता है। ये राजनीतिक पार्टियों ने देश में आग लगा के रखी हुई है, इस आग को जल्दी से बुझा दीजिए। अगर नहीं बुझा सकते तो आप जल जाएंगे, सब याद रख लेना। आज एक आंदोलन चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। आप देश की सारी पुलिस लगा दीजिए, सारी मिलिट्री लगा दीजिए, तब भी रुकने वाला नहीं है। ये पब्लिक का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। जनता का आंदोलन का मतलब है ये देश की आजादी स्वतंत्रता का आंदोलन है, क्योंकि स्वतंत्रता का आंदोलन के समय भी कोई पार्टी नहीं थी, याद रख लेना। जिस टाइम देश की स्वतंत्रता का आंदोलन होता, पार्टी नहीं थी। कांग्रेस भी उस टाइम पार्टी नहीं थी। कांग्रेस का मतलब था कि सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ, जो वास्तव में कांग्रेस का मतलब होता है। कांग्रेस पार्टी नाम की कोई चीज नहीं थी उस टाइम, और बाकी पार्टियां तो थी ही नहीं। तो वो एक सार्वजनिक आंदोलन था, देश की जनता का आंदोलन था। गांधी इसी बात को समझ पाया था जो बाकी नहीं समझ पाए थे, कोई भी नहीं समझ पाया था, कि जब तक लोगों को इकट्ठा नहीं करोगे आप अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता नहीं ले सकते। जब तक आप अपने को सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं दिखाओगे आप सत्ता नहीं ले सकते। यही तो थी इस बात, और क्या था। उसके बाद पार्टियां बन गई, देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गए, सब कुछ हो गया। और ये पार्टियां जब से बनी हैं, सच पूछिए तो देश गुलाम हो गया है मेरे हिसाब से। इन पार्टियों ने, राजनीतिक के दलों ने, वो स्वतंत्रता जो भारत के हर व्यक्ति ने लड़के ली सामूहिक रूप से, किसी के भी नीचे आके, चाहे गांधी या सुभाष के नीचे आए हो, पटेल के नीचे आए हो, जिसके मर्जी नीचे आप कह लिए, कांग्रेस थी वो। एक वो पार्टी नहीं थी, एक समूह था, एक आंदोलन था देश को स्वतंत्र कराने के लिए, जिसमें हर वर्ग ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। आज वही कांग्रेस दोबारा पब्लिक की जिंदी हो रही है इस आंदोलन के रूप में। इस आंदोलन के रूप में भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए, देश की आत्मा को बचाने के लिए वही लोग फिर इकट्ठे हो रहे हैं, और उनके विरुद्ध वही लोग फिर इकट्ठे हो रहे हैं जो स्वतंत्रता के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे। आज भी वही दो दल बने हुए हैं, एक दल जो स्वतंत्रता चाहता है, एक वो दल जो इसके सरकार को बचाना चाहता है। एक सरकार के साथ है और एक पब्लिक के साथ है। अब आपको कौन सा दल चुनना है आप सुन लीजिए। सिर्फ दो हिस्से बन गए हैं, एक तरफ भारत की सरकार के सपोर्टर्स हैं और एक तरफ भारत की पब्लिक के सपोर्टर्स हैं। आप किसके सपोर्टर बनना चाहते हैं चुनना आपको है। भारत की सरकार थोड़े समय के लिए है, पब्लिक हमेशा हमेशा के लिए है। भारत की सरकार अपने मतलब के लिए है और भारत की पब्लिक देश के मतलब के लिए है। सुनना आपको होगा। पुलिस जितने मर्जी डंडे मारेगी, सरकार की मर्जी है। सरकार चाहेगी इतने डंडे मारो तो पुलिस मारेगी, क्योंकि पुलिस का काम नहीं कर रही है, पुलिस सरकार का काम कर रही है। पैसा सरकार नहीं देती, पैसा पब्लिक देती है, लेकिन पुलिस सरकार का काम कर रही है।
क्यों कर रही है मैं नहीं जानता, किस डर से कर रही है मैं नहीं जानता। पुलिस की ड्यूटी में सरकारी ऑर्डर मानना नहीं आता, पुलिस की ड्यूटी में नियम का ऑर्डर मानना आता है, संविधान का ऑर्डर मानना आता है। जो अधिनियम कहता है, जो नियम कहते हैं पुलिस का काम, उसको मानना होता है। और यही काम मिलिट्री का भी होता है, सरकार का ऑर्डर नहीं मानना होता है, जो नियम कानून कहते हैं उसका ऑर्डर मानना होता है। लेकिन पुलिस शपथ लेने के बाद संविधान को फेंक देती है और अपने हिसाब से काम करती है, अपने राजनीतिक बॉसों के पास से, पॉलिटिकल बॉसों के हिसाब से काम करती है। आज देश का प्रधानमंत्री की हैसियत से काम नहीं कर रहा, वो एक राजनीतिक दल की हैसियत से काम कर रहा है और एक दूसरे दल की हैसियत से जो राजनीतिक भी नहीं है उसकी हैसियत से काम कर रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री होता, देश के मिनिस्टर होते, तो पब्लिक की बात को मानते सुनते, धर्म की बात नहीं सुनते। आज ऐसा नहीं है। आज सिर्फ माहौल ऐसा हो चुका है, आपको संविधान की शपथ लेनी है दिखाने के लिए, एक कागज साइन करने के लिए, उसके बाद संविधान को महासलाम। महासलाम का मतलब होता है जाइए हमेशा के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमने महासलाम के लिए संविधान नहीं बनाया था, संविधान को हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया था। शपथ ले ली, बात खत्म, अब क्या लेना देना संविधान से मुझे? अरे बंधे तो आप संविधान की शपथ से हो, नहीं तो सीढ़ियां भी गिरा देती हैं, याद रख लेना। संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान भगवान बन जाता है, क्योंकि आपने शपथ लिया उसकी। संविधान ही गीता बन जाता है, संविधान ही कुरान बन जाता है, संविधान ही बाइबल बन जाता है, संविधान ही गुरु ग्रंथ साहिब बन जाता है, संविधान ही रामायण महाभारत बन जाता है। संविधान सब धर्मों का निचोड़ है, संविधान सभी धर्मों का ग्रंथ है, क्योंकि ये मानवता का ग्रंथ है। ये संविधान अपने आप नहीं बन गया, इस संविधान के पीछे कितना कैलकुलेशन रही होगी, कितनी सोच विचार रही होगी, हम सब जानते हैं। ये नहीं कि आके मैं बैठ के लाओ मैं संविधान लिख देता हूं, 2 महीने का समय दो, 1 साल का समय दो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे सैकड़ों सालों के एक्सपीरियंस के लिखे आर्टिकल्स को कलेक्ट किया गया था। एक दिन में काम नहीं होता, सब वर्षों लग जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संविधान को मानना पड़ेगा, और जो संविधान को हटाना चाहेगा वो इतना शक्तिशाली नहीं कि संविधान को डिफीट कर दे, हरा दे। कोई भी शक्तिशाली इतना नहीं है आज की तारीख में। सोचते रहिए, आपकी ये क्या है, सोचते रहिए। पब्लिक का संविधान है ये किसी सरकार ने नहीं बनाया, ये पब्लिक ने, जनता ने बनाया है, सोच समझ के बनाया है, पूर्वजों ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। सरकार तो इसके तलवे चाटे तब भी चढ़े, तलवे चाटेगी तो भी किस्मत वाली होगी। संविधान के तलवे चाटिए आप, पूजा करिए उसकी आप। और पूजा कब होती है संविधान की? जब संविधान को मानते हैं आप, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आप। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। और जो भी सत्ता में किसी भी रूप से हैं, चाहे वो न्यायिक सत्ता हो, वो विधायिका सत्ता हो, वो कार्यकारी सत्ता हो, वो दूसरी सत्ताएं हो, जो सत्ताओं में सत्ताएं होती, जो उसको नहीं मानेगा, चाहे वो टेलीविजन चैनल्स हो, चाहे वो अखबार हो, जो भी हो, वो मिट जाएगा। एक समय आएगा ये टेलीविजन चैनल्स जो खरीदे हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जो अपनी वृत्तिका से दूर हैं, इन टेलीविजन चैनल्स को कोई पूछने वाला नहीं होगा। गली गली में बेचेंगे अपना सामान, को खरीदेगा नहीं इनके न्यूज को, क्योंकि इनको आज उनके तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है। सरकार के अफसरों से, सरकार के मिनिस्टरों से उनके तलवे चाटते रहते हैं। पैसा देते हैं हम, फीस देते हैं हम इंटरनेट पे, चाहे वो टाटा स्काई हो, एयरटेल हो, जो भी हो, उनको फीस देते हैं हम न्यूज देखने के लिए, टेलीविजन देखने के लिए, और तलवे चाटते हैं मिनिस्टर्स के। पब्लिक की चिंता इनको नहीं है। और वही हाल अखबारों का है, अपने हिसाब से न्यूज देते हैं। गवर्नमेंट को अच्छी लगेगी या गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगेगी। न्यूज वालों की न्यूज कौन खरीदता है? पब्लिक खरीदती है, लेकिन चिंता उनको भी गवर्नमेंट की है। ऐसे तो देश नहीं चल सकता। हम ऐसा देश तो नहीं चाहते। आज आपके दिल में जो आ रहा है आप कर रहे हैं, इसको दबा दो, इंटरनेट हटा दो, यही कर दो, वो कर दो।
अरे इंटरनेट तो इमरजेंसी के टाइम भी नहीं था, तब भी हुआ, आप ही थे उसमें, आपको अंदर डाला गया था, तब आप कैसे करते थे? अपना समय भूल गए या आप उसका बदला आज ले रहे हैं पब्लिक से? क्या कर रहे हैं आप बताइए? जम्मू का इंटरनेट बंद कर दो, कश्मीर का 5 महीने होने जा रहे हैं। दूसरे का इंटरनेट बंद कर दो, आसाम का, दिल्ली का इंटरनेट बंद कर दो, यूपी का इंटरनेट बंद कर दो। याद रख लेना, बंद करना कोई हल नहीं है, संभालना हल है। करते जाओ बंद, सब कुछ बंद कर दोगे तो आप भी बंद हो जाओगे। आप सारी पब्लिक खत्म कर दोगे तो आपको कौन पूछेगा? भारत देश इसीलिए है कि भारत की पब्लिक है, और तभी वंदे मातरम है, तभी भारत माता की जय। आप भारत की पब्लिक खत्म कर दीजिए, वंदे मातरम भी खत्म हो जाएगा, भारत माता की जय भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ नहीं आती? अरे आप हो क्या? सरकार हो, सर की कार हो, बॉडी की कार नहीं हो। आप सिर्फ सेवक हो तो सेवक की तरह काम कीजिए, पब्लिक की सुनिए। और पब्लिक की नहीं सुनोगे और न्यायालय भी यदि पब्लिक की नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आपकी किसी की भी। पब्लिक तो अपना अल्टरनेटिव ढूंढ ही लेगी, पब्लिक तो अपना काम कर ही लेगी जब भी करना होगा। जब अंग्रेजों को भगा दिया तो आप क्या हो भाई? इंदिरा को उठा के फेंक दिया था इसी पब्लिक ने, तो आप तो अभी किसी गिनती में नहीं हो। लंबे लंबे भाषण देने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, अपने कर्म का हिसाब दो तो बड़ा मानेंगे आपको। मुझे धमकियां दी जाती हैं इंटरनेट पे, देख रहो भैया जेल में डाल दोगे और क्या करोगे, मेरे भी आंख फोड़ दोगे, मुझे भी गोली मार दोगे, इससे ज्यादा आपके पास है क्या? मरना तो मुझे भी है एक दिन, चलो आप ही की बंदूक से मर जाएंगे भाई, क्या करोगे इससे ज्यादा? मेरे बोलने को, मेरे सोचने को, मेरी दृष्टिकोण को, मेरी विजन को क्या आप रोक सकते हो? क्या किसी के भी रोक सकते हो? हजारों लोग बोल रहे हैं, लाखों लोग बोल रहे हैं देश में, किस किस को रोकोगे? किस किस को जेल में भरोगे? किस किस को आप डिटेंशन सेंटर में डालोगे? क्या करोगे आप? आखिर आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। और जब आपको पता ना हो कि आपको करना क्या है, तो समझ लीजिए वो सरकार चलने वाली नहीं होती। कोई बिल जाता है हमारे महोदय महामहिम के पास, बिल जाता है, महामहिम का एक ही काम है, उसको फटाफट साइन कर दो, कहीं एक्शन ना हो जाए। महामहिम जी देखते भी नहीं है उस पे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, संविधान के मैच करता है कि नहीं करता है, आगे इसके बारे में कुछ जानकारी ली जाए कि नहीं ली जाए, बस साइन कर दो, फटाफट हो गया। महामहिम, महामहिम, चीफ इल्यूमिनेटर ऑफ दिस कंट्री, जहां रोशनी होनी चाहिए, जहां चांद की रोशनी होनी चाहिए, ज्ञान की रोशनी होनी चाहिए, सूरज की रोशनी होनी चाहिए, वो ऑफिस है, वो कार्यालय है, वो महामहिम का। ज्ञान का जहां रोशनी होनी चाहिए, इल्यूमिनेशन होनी चाहिए, जहां इग्निशन होनी चाहिए, जहां, वहां सिर्फ साइन करने का काम होता है। सिर्फ साइन कर दो बस। कमाल है। अरे आप पढ़िए तो सही क्या लिखा है। आपने शपथ ली थी महामहिम जी कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इसके अलावा अगर आपने कोई शपथ लिया तो बता दीजिए। आपने कहा था, शपथ ली थी कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, हम हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो अधिकारों की रक्षा आप करेंगे नागरिकों की, तो ऐसा क्या हो रहा है कि इतने नागरिक चिल्ला रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? आपका सोचने का नहीं बनता? महामहिम जी, कौन सोचेगा? महामहिम तो इस देश में आप एक ही हैं और तो कोई दूसरा नहीं है, कौन सोचेगा? आप प्रधानमंत्री से नहीं पूछा, आपने कोई पार्लियामेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं ली कि आपने ये नाम क्यों बनाया, क्या कारण था इसका? क्या पूछना आपका कर्तव्य नहीं था? आपने कर्तव्य पूरा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहते, आप हमारे महामहिम हैं। लेकिन जब पुलिस पकड़ रही है लोगों को, आप शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं।
लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, आप शांत बैठे हैं। खामा लोगों को पकड़ा जा रहा है, आप शांत बैठे हैं। इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है? विद्यार्थी पे। महामहिम जी, विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि आपके अंडर आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, मालूम है ना आपको? तो आप कौन हुए? आप तो सुपर पैटर्न हुए, सीनियर पैटर्न हुए। आप उनको पिटने देंगे? उनकी आवाज को नहीं सुनेंगे? आप तो नहीं सुन रहे। पुलिस डंडे बरसा दे उन पे, लाठियां बरसा दे उन पे, लाइब्रेरी तोड़ दे उनकी, आपको कोई चिंता नहीं। सरकार उनको आतंकवादी कह दे, आपको कोई चिंता नहीं। विद्यार्थी आतंकवादी होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना था। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, लेकिन विद्यार्थी आतंकवादी होता है, जिहादी होता है। तलवार लेके बैठे हैं वो, बंदूक बॉम्ब लेके बैठे हैं वो यूनिवर्सिटी में, पकड़े हैं आपने जाके, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे बुश ने पकड़ लिए थे इराक में, पकड़े थे क्या? तो विद्यार्थियों को आप आतंकवादी मान रहे हैं और पुलिस को आप देशभक्त मान रहे हैं। पुलिस उनको डंडा बरसा रही है, उनके हाथ पैर तोड़ रही है, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये बातें अपने आप में एक्सप्लोजिव हैं, क्योंकि देश के हित में नहीं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। देश की जनता सो रही थी और मुझे भी बहुत दुख था इस बात का, बहुत दुख था। जब 2014 से पहले 2013 तक एंड तक आंदोलन चले, एक महाशय आए थे अन्ना नाम के, और उनके साथ बहुत से उनके पतीले थे, बहुत से चमचे पतीले थे उनके साथ, जो शोर मचाते थे, जंतर मंतर में बैठ के शोर मचाते थे, रामलीला ग्राउंड में बैठ के शोर मचाते थे। वो सारे कबूतर कौवे आज कहाँ हैं? लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, कहाँ है वो लोकपाल? कहाँ गया वो भ्रष्टाचार? और कहाँ गए वो पक्षी जो शोर मचाते थे? और कहाँ गए वो अन्ना? कहाँ है आज वो? इस देश में है कि वो भी चले गए कहीं और? आज उनको कुछ दिख नहीं रहा कि देश में क्या हो रहा है। कब दिखेगा उनको? कहाँ है वो फौज का एक अफसर? कहाँ है वो IIT का एक इंजीनियर? कहाँ है वो सब? कहाँ है वो पुलिस की नाम की देवी? आज सब कहाँ गए? वो सब सत्ताधीश हो गए, सबको सत्ता मिल गई है। किसी को मिनिस्ट्री मिल गई, किसी को चीफ मिनिस्ट्री मिल गई, किसी को गवर्नरशिप मिल गई। अरे भाई, फिर वो पब्लिक के कब थे? कब अनशन करते थे? वो अब क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब क्या है? मतलब वो भी अवसरवादी थे, पब्लिक को उल्लू बना के चल दिए, पब्लिक उल्लू बन गई, विश्वास करके सो गई, क्योंकि एक साहब आ गए, पब्लिक ने विश्वास कर लिया और पब्लिक सो गई। 214 के स्टार्ट में पब्लिक सो गई, क्योंकि देश की सत्ता बदल गई। अब तो सब ठीक हो गया, अब भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, अब गरीबी दूर हो जाएगी, अब ब्लैक मनी आ जाएगी, सबके साथ 15 लाख आ जाएंगे, 10 करोड़ जॉब तो 5 साल में हो जाएंगे और सब ठीक है, विश्व गुरु तुम बन जाएंगे, इसलिए आराम करो। और 2019 तक सोती रही, 2014 चला गया, नोटबंदी हुई, सोते रहे, उसके बाद GST आई, फिर सोते रहे, उसके बाद कुछ और हुआ, फिर सोते रहे, JNK का डिसीजन ले गया, फिर सोते रहे, जो हुआ लोग सोते रहे, कोई बात नहीं, विश्वास है साहब, साहब है हमारे ऊपर बैठे हैं, सब संभाल लेंगे, साहब है हमारे। और साहब भी कह रहे हैं हमारा विश्वास ऐड हो गया है सबके साथ, सबके विकास में। सबका साथ हुआ आपका, सबको मारा पीटा, लाइनों में लगा दिया। सबका साथ, सबका विकास हुआ, आपने अच्छा विकास कर दिया, इकोनॉमी खराब कर दी, और सबका विश्वास हो गया। अब देखो, सबको आपने सड़क पे लाके रख दिया, तो सबका विश्वास हो गया, सब सड़क पे। अरे साहब, किस्मत वाले थे आप कि आपको देश की सत्ता मिल गई, बड़े बड़ों को नहीं मिली, आपके दूसरों को नहीं मिली, आपके सीनियर्स को नहीं मिली। देश ने आपको, भगवान ने आपको इतना बड़ा अवसर दिया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए,
पर आप तो विदेशों में भ्रमण करते रहे, पब्लिक की तो भूल गए आप कि विदेशों में जाएंगे, जैसे विदेश वालियों ने आपको वोट देना है, उन्होंने आपको सत्ता में लाना है, आप उनकी गरीबी दूर कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सही कर रहे हैं, अपनी तो आपकी स्वयं सही हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी, पब्लिक सही कर लेगी, आपकी आवश्यकता क्या है। बड़े दुख की बात होती है, इतना अवसर आपको मिला, आज की तारीख में आपने वो गंवा दिया। पब्लिक सड़क पे है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। ठीक है 10% लोग आप ला रहे हैं, उसके विरोध में लाइए, लेकिन पब्लिक पब्लिक है। पब्लिक जब गुस्से में आती, शोर मचाती, बच्चे क्या कहते मालूम, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या शान है आपकी। बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, ऑन जॉब जो जाना चाहते हैं वो बच्चे, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या गाना है, क्या क्या डायलॉग है। पहले हम कहते थे, छोटे थे, चूहा बत्ती ले गया, जानते थे आप उसका मतलब। जब बीजेपी की जगह जनसंघ होती थी एक जमाने में, इनका निशान होता था दिया और उसमें बत्ती, चूहा बत्ती ले गया, मतलब दिए से चूहा बत्ती ले गया तो दिया जलेगा नहीं, इसका मतलब जनसंघ को जीतना नहीं है। ऐसे बच्चे, आज क्या पढ़ा लिखा बच्चा है, वो कहता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब स्वयं आगे नहीं आते, पुलिस के पीछे रहते हैं और पुलिस को आगे कर देते हैं। जब आपने वोट लिए थे तो स्वयं आगे आते थे, तब तो पुलिस को आगे आप नहीं लाए थे। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। और मैंने एक पोस्टर देखा, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दोनों साहब खड़े हैं, छोटे बड़े साहब, मोदी साहब और वो साहब, और उसके डोम पे क्या है, स्वास्तिक बना है। मतलब समझे आप, सुप्रीम कोर्ट के डोम पे स्वास्तिक बना है, इसका मतलब क्या है बताना पड़ेगा, या समझते हैं आप। और बहुत से पोस्टर देखिए, आप ये देखिए कि हमारे देश का स्टूडेंट कितना इमेजिनरी है, कितना प्रैक्टिकल है, कहाँ का निशाना कहाँ लगा सकता है। इसका मतलब ये कि वो नींद से बाहर आ चुका है। वो जो मोदी नाम का मंत्र था, मोदी 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 मोदी, कोई बात हो मोदी मोदी, अच्छी बात हो मोदी मोदी, बुरी बात हो मोदी मोदी, चाहे टीवी चैनल पे हो, सड़क पे हो, गली में हो, कनॉट प्लेस में हो, बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो, मोदी 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 मोदी, हर बात का आंसर मोदी 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 मोदी। जब कोई प्रश्न का आंसर नहीं तो मोदी 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 मोदी। मोदी मंत्र प्लस में भी था और मोदी मंत्र माइनस में भी था, मोदी मंत्र अच्छाई में भी था और मोदी मंत्र बुराई में था। अब वो मोदी मंत्र हो गया, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या शान हो गई, पब्लिक से डरते हैं आप, कमाल है। आपका नाम 56 भी है, फिर पुलिस से डरते हैं आप, पब्लिक से डरते हैं आप। क्या बिगाड़ लेगी पब्लिक आपका, आप तो पावर में हैं, पुलिस के साथ आप हैं, मिलिट्री के साथ आप हैं, वो आपके साथ हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। पब्लिक में आके बात कीजिए, उनसे पूछिए उनकी समस्या क्या है, उसको सुलझाइए, अपना बड़प्पन दिखाइए। हम पार्लियामेंट से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पार्लियामेंट में अक्लमंद तो बैठे नहीं हैं। 98% लोग पार्लियामेंट में ऐसे बैठे हैं जो ना संविधान को समझते हैं, ना पब्लिक को समझते हैं, ना देश की समस्याओं को समझते हैं। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उनको या करना है या ना करना है, yes it, eyes it, eyes it, eyes have it, eyes have it, eyes have it, no have it, no have it, no eyes and no, ये करना है। मतलब ये कि उनको अपना माइंड यूज नहीं करना, उनको डिबेट से कोई मतलब नहीं, जो आता है बस हमको तो सर गिनने हैं, गिन लो, ये सर ज्यादा है तो सीट पास हो गई और सीट ज्यादा नहीं है तो फेल हो गई। वो चाहे विरोध के लेगी हो या वो ट्रेजरी बेंच के हो, सरकार के लोग हों, किसी के साथ हों। इसलिए आज पार्लियामेंट की वैल्यू वो नहीं है जो होनी चाहिए, वो वैल्यू नहीं है। बहस में कोई मतलब नहीं, कोई खुल के बोलता नहीं, दबी दबी आवाज में बोलते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता, क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाती। जो निचोड़ आता है बहस में, डिबेट में,
उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एक दिखावा रह गया है, खेल रह गया है कि देखो हमने लोकतांत्रिक तरीके से बहस कर ली। कर लीजिए बहस, उस बहस का कोई मतलब नहीं। जब बहस का सिर्फ गिनती से होना हो बिल पास, तो उस बहस को बहस नहीं कहा जा सकता। एक रिकॉर्ड के लिए, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की जर्नल के लिए, सिर्फ उनके लिए बहस कर रहे हैं आप। अगर कोई बात निकलती है तो उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और ये क्या है, आई सेड बात खत्म हो गई। आपके प्रोसीजर है, मैं मानता हूं, लेकिन बहस को आपने लिया कहां? पहले ही फैसला कर रखा है, हमको तो यस कहना है, हमको नो कहना है। जब पहले ही फैसला कर लिया है तो बहस का मीनिंग क्या रह गया? ये बात क्या विद्यार्थी नहीं समझता, आप सोचते हैं? क्या नहीं समझता वो? आपने जो सोच लिया आपने वो करना है, तो पार्लियामेंट का मतलब भी नहीं रह गया। आप JNK का बिल लाए, उसी दिन सब कुछ करना है। बिल किसी को समझ आए या ना आए, बिल में वेट हो या ना हो, आपको तो बस पास कराने से मतलब था। और वही आपने CAB, जिसका आज CA कहते हैं, वही किया। किसी को समझ आए या ना आए, आपको तो पास कराना है। पब्लिक से आपका कोई लेना देना नहीं है। ना तो आपने JNK का बिल पब्लिक में पब्लिश किया कि देखिए हम ये करना चाहते हैं, टाइम देते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, अपने सजेशंस आप डालिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस आप डालिए, वो आपने नहीं किया। और इस पर भी जो पूरे देश की पब्लिक का इम्पैक्ट होता है CAB पे, उसका भी आपने पब्लिक में ड्राफ्ट नहीं दिया। 1 महीने 2 महीने का टाइम नहीं दिया, बस आपने कर दिया। मतलब ये कि आपने पब्लिक के सजेशंस का, सुझाव का, उनके अपोजिशंस का, उनके समर्थन का कोई ध्यान नहीं रखा। बस पब्लिक ही हम हैं और गवर्नमेंट भी हम हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। जब सरकार के माइंड ऐसे हो जाएं, सरकार का व्यवहार ऐसा हो जाए, तो वंदे मातरम का कोई मतलब नहीं रह जाता, भारत माता की जय का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि आप देश को देश नहीं, अपने आप को देश समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हम ही देश हैं। पार्लियामेंट एक मशीन है जिसके थ्रू हम इस बिल को डालेंगे और उधर से निकाल लेंगे, प्रिंट हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। पार्लियामेंट को आपने एक मशीन समझ लिया है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और राष्ट्रपति साहब तो है ही मशीन। उनको तो कोई मतलब नहीं है, बस ठक साइन कर दो और भेज दो। क्या हम पार्लियामेंट इसलिए बनाते हैं कि वो मशीन हो या काम करे? मशीन हो गई है पार्लियामेंट। लोकसभा हैज बिकम ए मशीन, Rajya has become a machine. They have to manage come what may. And these political leaders, they have got no value, no maturity, no morale. These people should not, they cannot command respect from people, whoever they are. Opposition people or non-opposition people, treasury people or alliance people. Whoever they are worthless. Just like government is worthless. Openly we have to say, why fear? Yes, you put in jail, do whatever you want. We have to speak, must speak. Those who have fear, they have no lives. What for have to fear, or you have to fear? Have you taken money from Prime Minister? You'll support him? No, I don't need such money. Prime Minister have to think for people, not otherwise. If Prime Minister stops thinking of people, that Prime Minister cannot survive. Cannot survive. Yes, this is democracy. We have to consider both ends. That is basic principle of democracy. But there's a principle also for government. Government has to work for people, not otherwise. Similarly, people of this country have to manage this country through government, not otherwise. People can directly manage, but that's not practically possible. We have to think that way. Today, we are standing on a crossroads. It was 1947 and 9 is 2019 and 20 is coming. 20 has to give us many changes. 20 shall find many changes through public.
Either government is to be set in right direction or it has to go. How long can you do like this? You cannot oppose people. Now what's happened? One side is government and opposition is public. There is no opposition political party here. Political parties are all doing nothing. Congress is lead opposition is sleeping. They are not doing anything in this regard. Yes, they are speaking something sometimes, but very rarely. They should lead public as a opposition party, but public is doing itself. Public is not supported by Congress, and public is not even bothering about Congress. That is a drawback on Congress currently. Congress should have come 1 year back, 6 months back to fight. But no, they are fighting now. Not only Congress, all are now speaking because they know public is slipping out of their hands, their controls. And public is slipping, of course. Public has slipped out of control. Public know very well what's happening, what's not happening. Public is not fool. Public know very well that religion has no place in our constitution. So how it can come in statute? Whatever judgment court will pass, I am not concerned with that now. This is public judgment. Public has decided that religion is no link to constitution. Public has virtually decided, and that is the reason public is jointly and severally demonstrating, irrespective of what religion they belong to. You can see whatever demonstration, anywhere, you will find all people in that. Not one religious people. No. This means something has been caused somewhere incorrect, anti-constitutional, unconstitutional. We should not accept this. But government has to say. And we have to go back. We have to go back in our history when we got Bharat Swatantrata, India Independence Act, though that's not valid now, but history is there. And I talked to you about that before as well. And that is very, I'll speak that one. I'll close some that files, and then I'll speak about that. That is very practical for us, and we have to understand that what we are. And I just talked of that 2 days back. This is Government of India Act. India Independence Act. I completed Government of India Act yesterday. So this is 1947 India Independence Act, in which there were so many titles. I'll just repeat that for information so that you know it. It's just a repetition. Then this is an arrangement of sections, and section is new dominion, then territories of new dominions, Bengal and Assam, and Punjab, Governor General of new dominions, legislation for new dominions, consequences of setting up new dominions, temporary provisions as the government of each of new dominions, and orders for bringing this act into force, and Secretary of State's Services, and Indian Armed Forces and British Forces in India, naval forces, provisions as to Secretary of State and Auditor of Indian Home Accounts, and legal proceedings by and against the Secretary of State and addend and diverse jurisdiction, provisions as to existing laws and interpretation, and short title and the schedules, etc. And if you go in this schedule, the first schedule is a Bengal district provisionally included in new province of East Bengal. And second schedule is district provisionally included in new province of West Punjab. And third schedule is modifications of Army Act and Air Force Act in relation to British force. And we have to see that. And we have to go to see that another one. Yeah. This is chapter. This act has come, and I just speak act. This is an act to make a provision, for setting up of India to two independent dominions, to substitute other provisions for certain provisions of Government of India Act 1935, which apply outside those dominions, and to provide for other matters consequential
on or connected with setting up of those dominions. This was on 18th July 1947. 18 जुलाई 1939 एक ऐसा अधिनियम बनाया ब्रिटिश की सरकार ने, जिसमें भारत को, इंडिया को दो हिस्सों में विभाजित किया। इंडिपेंडेंट हिस्से एक दूसरे पर निर्भर नहीं, और उसको कहते हैं भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1935, जो इन दोनों देशों से बाहर भी लागू होता है। और इसके विषय में हम बात कर रहे हैं, और मैंने पहले आपको बात की है, काफ़ी आर्टिकल्स के बताए थे, लेकिन फिर भी दोबारा थोड़ा बता देता हूँ, हिंट याद आ जाए। Be it enacted by King's most excellent majesty, by and with advice and consent of lords spiritual and temporal and commons in this present parliament assembled, and by authority of same as follows. As from 15th day of August 1947, two independent dominions shall be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan, and said dominions are hereafter in this act referred to as new dominions, and said 15th day of August is hereafter in this act referred to as appointed day, and subject to provisions of subsections 3 and 4 of this section. Territories of India shall be territories under sovereignty of His Majesty, which immediately before appointed day were included in British India, except territories which under subsection of this section are to be territories of Pakistan, subject to provisions of subsections 3 and 4 of this section. Territories of Pakistan shall be territories which on appointed day are included in province of East Bengal and West Punjab, as constituted under two following sections. Territories which at date of passing of this act are included in province of Sindh and Chief Commissioner's province of British Balochistan, and if whether before or after passing of this act, but before appointed day, Governor General declares that majority of valid votes cast in referendum which at date of passing of this act is being or has recently been held in that behalf under this authority in Northwest Frontier province are in favor of representatives of that province taking part in Constituent Assembly of Pakistan. Territories which at date of passing of this act are included in that province. So I was just nothing in this section shall prevent any area being at any time included in or excluded from either of new dominions. So however, that no area, no area not forming part of territories specified in subsection 1, or as the case may be subsection 2 of this section, shall be included in either dominion without consent of that dominion. No area which forms part of territories specified in subsection as case may be said subsection 2, or which has after appointed day been included in either dominion, shall be excluded from that dominion without consent of that dominion, without prejudice to generality of provisions of subsection of this section. Nothing in this section shall be construed as preventing accession of Indian states to either of new dominion. And then section 3 is Bengal and Assam, as from appointed day, province of Bengal as constituted under Government of India Act 1935 shall cease to exist. There shall be constituted in lieu thereof two new provinces to be known respectively as East Bengal and West Bengal. If whether before or after passing of this act, but before appointed day, Governor General declares that majority of valid votes cast in referendum which at the date of passing of this act is being or has recently been held in that behalf under his authority in district of Sylhet
Sylhet are in favor of that district forming part of new province of East Bengal. Then, as from that day, a part of province of Assam shall, in accordance with provisions of subsection 3 of this section, form part of new province of East Bengal. As from the appointed day. So this is okay, East Bengal. Then boundaries of new provinces aforesaid, boundary of new provinces aforesaid, and in event mentioned in subsection 2 of this section, boundaries after appointed day of province of Assam shall be such as may be determined, whether before or after appointed day, by award of boundary commission appointed or to be appointed by Governor General in their behalf, but until boundaries are so determined. Bengal district specified in first schedule Bengal district specified in first schedule to this act, together with in event mentioned in subsection of this section, Assam district of Sylhet shall be treated as territories which are to be comprised in new province in East Bengal. Remainder of territories comprised at date of passing of this act in province of Bengal shall be treated as territories which are to be comprised in the provisions of West Bengal. In event mentioned in subsection 2 of this section, district of Sylhet shall be excluded from province of Assam. And in this section, expression award means in relation to a boundary commission, decision of chairman of that commission contained in his report to Governor General, conclusion of completion. So there in the section 4th, as from appointed day, province of Punjab as constituted under Government of India Act 1935 shall cease to exist, and there shall be constituted two new provinces to be known respectively as West Punjab and East Punjab. Boundaries of said new provinces shall be such as may be determined, whether before or after appointed day, by award of a boundary commission appointed or to be appointed by Governor General in that behalf, but until boundaries are so determined. Districts specified in second schedule to this act shall be treated as territories to be comprised in the province of West Punjab. Remainder of territories comprised at date of passing of this act in province of Punjab shall be treated as territories which are to be comprised in new province of East Punjab. In this section, expression award means in relation to the boundary commission, decision of chairman of that commission contained in his report to Governor General at conclusion of commission proceedings. For each of new dominions, there shall be a Governor General who shall be appointed by His Majesty and shall represent His Majesty for purposes of government of dominion, provided that unless and until provision to contrary is made by a law of legislature of either of new dominions, same person may be Governor General of both new dominions. Legislature, section 6 is legislature of each of the new dominions shall have full power to make laws for that dominion, including laws having extraterritorial operation. No law and no provision of any law made by legislature of either of new dominions shall be void or inoperative on ground that it is repugnant to law of England or to provisions of this or any existing or future act of Parliament of United Kingdom or to any other rule or regulation made under any such act. And powers of legislature to each dominion include power to repeal or amend any such act, order, rule or regulation insofar as it is a part of law of dominion. Governor General of each of new dominions shall have full power to assent in His Majesty's name
to any law of legislature of that dominion, and so much of any act as relates to disallowance of laws by His Majesty or reservation of laws for significance of His Majesty's pleasure thereon, or suspension of operation of laws until signification of His Majesty's pleasure thereon shall not apply to laws of legislature of either of the new dominions. No act of Parliament of United Kingdom passed on or after appointed day shall extend or be deemed to extend to either of new dominions as part of law of that dominion, unless it is extended thereto by a law of legislature of dominion. No order in council made on or after appointed day under any act passed before appointed day, and no order, rule, or other instrument made on or after appointed day under any such act by any United Kingdom minister or other authority shall extend or be deemed to extend to either of new dominion as part of law of that dominion. Power referred to in subsection 1 of this section extends to making of laws limiting for future powers of legislature of dominion. Then, as from appointed day, Majesty, His Majesty Government in United Kingdom have no responsibility as respect government of any of territories which immediately before that day were included in British India. Sovereignty of His Majesty over Indian states lapses, and with it all treaties and agreements in force at date of passing of this act between His Majesty and rulers of Indian states, all functions exercisable by His Majesty at that date with respect to Indian states, all obligations of His Majesty existing at that date towards Indian states or rulers thereof, and all powers, rights, authority, or jurisdiction exercisable by His Majesty at that date in or in relation to Indian states by treaty, grant, uses, sufferance, or otherwise. And these lapses, and the lapses also any treaties or agreements in force at date of passing of this act between His Majesty and any persons having authority in tribal areas. Any obligations of His Majesty's existing at that date to any such persons or with respect to tribal areas, and all powers, rights, authority, or jurisdiction exercisable at that date by His Majesty in or in relation to tribal areas by treaty, grant, uses, sufferance, or otherwise. Provided that, notwithstanding anything in this paragraph B or paragraph of this subsection, effect shall, as nearly as may be, continue to be given to provisions of any such agreement as is therein referred to, which relate to customs, transit, and communications, posts and telegraphs, or other like manners, until provisions in questions are denounced by ruler of Indian state or person having authority in tribal areas on one hand, or by the dominion or province or other part thereof concerned on other hand, or superseded by subsequent agreements. Assent of Parliament of United Kingdom is hereby given to the omission of from royal style and titles of words in the I Imperator and words Emperor of India
and to issue by His Majesty for that purpose of his royal proclamation under Great Seal of Realm. Section 8. I'm just referring these sections for some more time, then I'll come to remaining act. In case of each of the dominions, powers of legislature of dominion shall, for purpose of making provision as to constitution of dominion, be exercisable in first instance by constituent assembly of that dominion, and reference in this act to legislature of dominion shall be construed accordingly, except in so far as other provisions is made by or in accordance with a law made by constituent assemblies of dominion under subsection 1 of this section, each of new dominions and all provisions and all parts thereof shall be governed as nearly as may be in accordance with Government of India Act 1935 and provisions of that Act and of Ordnance Council rules and other instruments made thereunder shall, so far as applicable and subject to any express provisions of this Act and with such omissions, additions, adaptations, and modifications as may be specified in orders of Government General, Governor General under next succeeding section have effect accordingly, provided that said provision shall apply separately in relation to each of new dominions, and nothing in this subsection shall be construed as continuing on or after appointed day and central government or legislature common to both new dominions. Nothing in this subsection shall be construed as continuing in force on or after appointed day any form of control by His Majesty's government in the United Kingdom over affairs of new dominions or of any province or other part thereof. So much of said provisions as requires governors generals of any governor to act in his discretion or exercise his individual judgment as respects any matter shall cease to have effect from appointed day. As from appointed day, no provincial bill shall be reserved under Government of India Act 1935 for significance of His Majesty, so pleasure, signification of His Majesty's pleasure, and no provincial act shall be disallowed by His Majesty thereunder. Powers of federal legislature or Indian legislature under that act as in force in relation to each dominion shall in first instance be exercisable by Constituent Assembly of Dominion in addition to powers exercisable by that Assembly under subsection 1 of this section. Any provision of Government of India Act 1935 which is applied to either of new dominion by subsection 2 of this section and others therein referred to operates to limit powers of legislature of that dominion shall unless and until other provision is made by or in accordance with a law made by Constituent Assembly of Dominion in accordance with provisions of subsection 1 of this section have like effect as new law of legislature of dominion limiting for feature of power of that legislature. So these are now 8 sections. I leave 9. This is Governor General orders and orders for bringing this act into force. This is section 9, which I am leaving to you to read yourself, and I am going further on to other parts of this act because this is all implementation part. Then Secretary of State Services, this is another one, so I'm leaving as it is, but these are part of implementation. Then there is another 11 section. All this is Indian Armed Forces. I'm leaving this also.
Then Section 12 is British forces in India living in Israel. My purpose is just to apprise you what actually this act had. Then it's the naval forces, Section 13. And fourth is provision as to Secretary of State and auditor of income tax accounts. I'm leaving it here. Then Section 15 is legal proceedings by and against Secretary of State. So I'm leaving it here. So these are nothing to do with direct application, direct power of this act. These are implications. Then Aden is written, and this is Aden, just I will inform you what Aden is. It's 16, this section 16 says that subsections 2 and 4 of section 288 of Government of India Act 1935, this is referring to Government of India 1935, which confers on His Majesty's power to make by order in council. This is order in council related to the section. This is section, you can say, 288 of Government of India Act 288 is order in council, which is 1995 act, and this is confirmed His Majesty power to make by order in council provisions of our government of Aden shall cease to have effect, and British Settlements of Acts 1887 and 1945, which authorize His Majesty to make laws and establish institutions of our British settlements as defined in those acts shall apply in relation to Aden as if it were a British settlement, and so defined. So, notwithstanding repeal of said subscriptions 2 and 4, orders in council in force thereunder at date of passing of this act shall continue in force. See, notwithstanding repeal of said subsection 2 to 4, orders in council in force thereunder at date of passing of this act shall continue in force, but said orders in council, any other orders in council made under Government of India Act 1935, insofar as they apply to Aden, and any acts applied to Aden or amended in relation to Aden by any such orders in council, as I have said, may be repealed, revoked, or amended under powers of British Settlements Acts 87. Okay, so this is regarding that one. This is a very important part of this Order in Council on 28 of Government of India Act 1935. Also is written for the unless and until provision to contrary is made respects Aden under powers of British Settlements Act 1887-1945, or as respects to new dominion in question by a law of legislature of that dominion, provisions of the said orders in council and enactments relating to appeals from any courts in Ireland or any courts which will after appointed day being either of new dominions shall continue in force in their application both to Aden and to dominion in question, and the last mentioned current courts shall exercise their jurisdiction accordingly. And then 17 is diverse jurisdictions, so we leave it. Then is a provision of existing laws, I leave that also. So as then interpolation 19, let's say, what says reference in this act to Governor General shall in relation to any order to be made or other act done on or after appointed day be construed where order or other act concerns only one of new dominions as reference to Governor General of that dominion, where order or other act concerns both of new dominions and same person is Governor General of both those dominions as reference to that person, and in any other case reference to Governor General
of new dominions acting jointly. And reference in this Act to Governor General shall, in relation to any other order, be made or other act done before appointed day, be construed as reference to Governor General of India within meaning of Government of India Act 1935, and so much of that or any other act as required references to Governor General to be construed as references to Governor General in Council shall not apply to references to Governor General in this Act. And then we'll go further, it's all same, the references, construction references, leave them aside. Then we go to certain meanings are there about India and what is India. Meaning, let us go through. In this Act, except this is so far as the context otherwise requires, references to the Government of India Act 1935 include references to any enactments, amending or supplementing that act, and in particular references to India, Central Government of Legislature Act 1946. India refers to state affairs existing before appointed day or which would have existed but for passing of this act as meaning assigned to it by section 311 of Government of India Act. And Indian forces, I'm feeling cold. Indian forces cold. Better do something. Indian forces includes all His Majesty's Indian forces existing before appointed day, and also any forces further or pension. Okay, that's definition, and province definition. Leave it all depending on why you waste time. Now, this act may be cited as Indian Independence Act 1947, and this is giving schedules in that now. Now, schedules is saying first schedule, Bengal districts are provisionally included in new province of East Bengal. It says in Chittagong division, districts of Chittagong, Noakhali and Taipara. In Dhaka division, districts of Bikarganj, Dhaka, Faridpur and Mymensingh. In Presidential Division, districts of Jessore, Murshidabad and Nadia. In Rajasthan Division, district of Bogra, Dinajpur, Malda. Rajshahi Division, not Rajasthan, sorry. In Rajshahi Division, district of Bogra, Dinajpur, Malda, Pabna, Rajshahi and Rangpur. Then second schedule, districts provisionally included in new province of West Punjab. In Lahore division, districts of Gujranwala, Gurdaspur, Lahore, Sheikhupura and Sialkot. In Rawalpindi division, district of Atok, Gujarat, Jhelum, Mianwali, Rawalpindi and Shahapur. In Multan division, district of Dera, Ghazi Khan, Jhang, Layalpur, Montgomery, Multan and Muzaffargarh. This is second one. Third one is third schedule, modification of Army Act and Air Force Act in relation to British forces. Part 1, modification of Army Act applicable also to Air Force Act. Provision to Section 41, which limits the jurisdiction of court martial, shall not apply to offences committed in either of new dominions or in any of other territories which were included in India before appointed day.
In section 43, which relates to complaints, words with approval of Governor General of India in Council shall be omitted. In subsections 8 and 9 of section 44, which amongst other things require certain sentences to be confirmed by Governor General in Council, words India or words by Governor General as case may be, and words in India by Governor General or if he has been tried shall be omitted. In subsection 3 of section 73, which provides for nomination of officers with powers to dispense with court-martial for desertion and fraudulent enlistment, words with approval of Governor General shall be omitted. Powers which confer by subsection, so there are various clauses here, is giving some clarifications. You can go through this, there's no problem in that. And then we have part 2, modifications of Air Force Act, that is there. Then once the act is over, this was regarding our victory from British, this India Independence Act 1947, which is a document, and this was repealed when Constitution was published. This Act, Government of India Act 1935, as well as you can say as well as other act, that is India Independence Act 1947, both were annulled, repealed when Constitution came into force in 1950. My purpose of apprising you about this act was just keep you abreast of what actually happened until we know what happened in past, what happened, where were ruled, under which law we were ruled under India, under the Government of India Act 1935 to 1950, and we were liberated under Act of Independence of India Act 1947. This is our history, legal history, and if you don't understand these meanings, if you just speak of one, the Constitution of India is there, we are not able, we shall not be able to really understand what we are. We have to look into our history, legal history, and only then we can understand what we are. Nation is very big, people are great, system is great. We have our Constitution, we have our various laws based on that Constitution, we have pre-independence laws, and we have post-independent laws. There have been many laws that were repealed, that were abrogated post-independence. And there are many laws which continue to be in force, and until now they are in force. Those are called existing laws. And before this, I have to just explain to you what is legal system. Our legal system, just for your information, is not for lawyers, they know all that. It's only for people who do not know that, but who should know something. I'm not, first of all, telling you I'm not professional in law, but with my general understanding of law, what law is, what I could observe, what I could understand, is just trying to tell, trying to advise you. First law is we people of this country. We people of this country, which is Bharat Mata, Jai Bharat.
We are law unto ourselves, all people of this country, A, B, C to X, Y, Z. We are law unto ourselves, and we generated one law to apply on all citizens of this country. That is called Constitution of Bharat, Constitution of India, भारत का संविधान. भारत का संविधान, Constitution of India, is dominant law of this dominion, which you call Dominion of India, Dominion of Bharat. This law is foundation of all laws in this country, whether pre-independence law or post-independence law. This law tells us what you are, who you are, what you have to do, how you have to do, how you have to live in this country. And then this is called main law. It contains many chapters we have discussed. Many chapters are there. It tells us what we have to do, how we have to live, what are legal responsibilities and duties, and these duties for all. Then we have statutes, acts, you can say. We have hundreds of acts, many hundreds. Some acts were abrogated per constitution. A time was allowed to president or governor general, that the president at time, that if president was placed in 3 + 2 years, certain laws could be abrogated or repealed, and those who were not repealed were allowed to continue in force. And in this 5 years period, certain laws were adopted by modifications, and some were repealed, and some were allowed to work as they were. So a group of all this is called existing law. Existing law उन लॉ को कहते हैं जो हमारे पास थे संविधान के अलावा. संविधान जो हमारा सबसे बड़ा कानून, नियम, प्राइम लॉ, उसमें बहुत कुछ डिफाइन है. वो सारे हमारे कानून नियम हैं देश के, सबसे बड़े नियम, और उन्हीं के अंडर हमको दूसरे कानून नियम बनाए. इस नियम में स्वतंत्रता के बाद समय दिया गया कुछ वर्षों का, टोटल 5 वर्ष, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार था कि वो कौन से कानून रखना चाहे, कौन से नियम रखना चाहे, कौन से हटाना चाहे, पूरा अधिकार था उनको. वो अधिकार का प्रयोग भी किया गया, यूज भी किया गया. बहुत सारे लॉ को सुधारा गया, बहुत सारे लॉ को ऑमिट किया गया, रिपील किया गया, और बहुतों को अडॉप्ट किया गया. वो सब उन्होंने किया 5 साल में, 5 वर्ष में. अधिकार था उनके पास, राष्ट्रपति के पास. आप पढ़ सकते हैं संविधान में उठा के, उसमें क्या लिखा है, वो क्या चलता है. 372, उसमें क्या कहा गया है. बहुत सारे नियम उस टाइम थे जिनको समाप्त भी किया गया था, एक पूरी लिस्ट है. और ऐसे भी थे जिनको वैसा ही माना गया था जैसे चलेंगे, या कुछ सुधार किए गए थे. देश के नाम बदला गया था, ब्रिटिश इंडिया से हटाकर इंडिया किया गया था, भारत किया गया था. वो नियम बाद में और सुधर गए. उस समय कुछ चार्टर भी मिलते थे ब्रिटिश राज में, जैसा मैंने बताया अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में, कि ब्रिटिश के कानून नियम के हिसाब से कुछ अधिकार पत्र, राजपत्र दिए जाते थे कुछ संस्थाओं को, या ऐसे लोगों को जो संस्थाएं चलाते थे, इंस्टीट्यूशन चलाते थे. चार्टर उनको दिए जाते थे, और वो चार्टर ऑर्डर एंड काउंसिल माने जाते थे. उस समय जो प्रिवी काउंसिल होती थी, ऑर्डर एंड काउंसिल जो होती थी, पार्लियामेंट के नियम के हिसाब से काम करती थी. और वो ऑर्डर्स काउंसिल आज भी हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ,
कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एग्जाम्पल है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एग्जाम्पल है, जो चार्टर है, आज भी है। इस बात को भी जानना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून का, नियम का। संविधान के नीचे सबसे ऊपर पब्लिक, उसके नीचे संविधान, और संविधान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे नियम कानून का है, आप लीगल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, नियम का बंधन, जिस तरह से हमारे नियम बांधे गए। नियम में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, संविधान के बाद, आफ्टर संविधान देन इट कम्स पार्लियामेंट एक्ट, स्टैच्यूट। जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हम कर रहे हैं आज की तारीख में, वो सिटीजन एक्ट, वो नागरिक अधिनियम का सुधार किया गया, उसको आज की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया, चेंज किया गया। वो गलत हुआ या सही हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सरकार ने समझा, पार्लियामेंट ने समझा कि आज उसको सुधारने की जरूरत है, उसको अमेंड किया गया। और उसी अमेंडमेंट को हमने कहा कि ये सीए भी है, क्योंकि जब तक वो राष्ट्रपति पास नहीं कर देते उसको बिल कहा जाता है, और जब राष्ट्रपति पास कर देते हैं लोकसभा राज्यसभा के बाद में, तो उसको अधिनियम कहा जाता है, जिसको हम एक्ट कहते हैं। एक्ट में सेक्शन होते हैं हमारे देश में, और संविधान में आर्टिकल होते हैं। ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आज झगड़ा चल रहा है उस सिटीजनशिप एक्ट का चल रहा है। सिटीजनशिप संविधान में भी है, इसलिए सिटीजनशिप को आप छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान में इसको डिफाइन किया गया है और एक्ट में उसको एम्प्लीफाई किया गया है। तो सिटीजनशिप एक्चुअली संवैधानिक है, ये खाली एक्ट से नहीं आई है। सिटीजनशिप आपका प्राइम लॉ में आती है, संविधान में आती है। सो सिटीजन होना ही अपने आप में संवैधानिक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लोगों को और देश की सरकार को समझना चाहिए। इसके अलावा कुछ हमारे जितने भी अधिनियम हैं देश के, उस अधिनियमों में बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्योंकि ये एक्सपर्ट ही जानते हैं इस अधिनियम के बारे में कि इसको आगे कैसे चलाया जाए, वही जानते हैं अपने विषय के बारे में, क्या वास्तविकता है वहाँ, क्या स्पेशलिटी है वहाँ। तो होता क्या था पहले, उसके बारे में जो संस्था उसको डील करती थी, उनको आगे उनके बाईलॉज बनाने होते थे, तो पार्लियामेंट उनको अधिकार दे देती थी कि आप ऐसा स्वयं कीजिए। उसको कहते थे डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, विधायिका है, इस तरह से डेलीगेशन कर दी जाती थी कुछ नियमों में, अधिनियमों में, कि आप ये स्वयं बना लीजिए बाईलॉज और रेगुलेशंस। मतलब ये कि जो कानून बना, जो नियम बना, अधिनियम बना, उसके नीचे बाईलॉज भी चाहिए थे, उसके नीचे रेगुलेशंस भी चाहिए थे। तो वो पावर दी जाती थी या स्वयं पार्लियामेंट बनाती थी। ये पार्लियामेंट की ड्यूटी में आता है। इन अधिनियम बनाए, उसके नीचे रेगुलेशन, बाईलॉज बनाए, रेगुलेशंस बनाए, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेचर करता था या स्वयं करते थे। ये ज़्यादातर केसेस में इंस्टीट्यूशंस करते थे उस काम को, जो ये एक्सपर्ट नहीं होते थे मेंबर्स, इसलिए वो नहीं कर पाते थे। ये हमारे देश का कुछ हिस्सा है। तो ऐसे नियम जो दूसरे को डेलीगेट कर दिए जाते हैं उसको कहते हैं स्पेशल लॉ। जैसे उसके एग्जाम्पल हैं इंजीनियर्स एक्ट, आर्किटेक्ट एक्ट्स, डॉक्टर्स के नियम, जो भी हैं उसमें इतना इंटरेक्ट होता है, एक आम आदमी के बस का बात नहीं है। ये एक नहीं, हजारों हमारे अधिनियम हैं और उसके नीचे हजारों ही बाईलॉज या रेगुलेशंस हैं। ये हमारा सिस्टम, इनके बार बार अमेंडमेंट होते हैं, संविधान के अमेंडमेंट होते हैं, वो करते रहते हैं हम जब भी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। इसमें ये सवाल नहीं कि सरकार पावर में है, अगर जरूरत है तो उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और जरूरत नहीं है तो मत कीजिए।
अच्छा यही होता है कि पब्लिक को इन्फॉर्म करके काम किया जाए। अगर पब्लिक अपना नुकसान करना चाहती है तो पब्लिक ना सहायता दे, लेकिन जब आप देश में आंदोलन कर रहे हैं तो पैसे की जरूरत आपको पड़ती है। ये बहुत जरूरी है। मेरा मतलब कहने का यह है, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ इज, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव पार्लियामेंट एक्ट्स, एंड देन वी हैव फर्दर डाउन delegated legislature, or we have bylaws and regulations. These are generally applicable to all fields in this country. Laws in all fields. We have to understand that. जैसे आप देखेंगे, बिल्डिंग परमिट के लिए आप जाते हैं म्यूनिसिपालिटी में, तो आप कहते हैं जी हमें नक्शा पास कराना है, तो आपसे कहते हैं आप इसमें से आर्किटेक्ट का साइन करा के लाइए। क्या जवाब देते हैं? अच्छा जी करा लाएंगे। और ये पूछना तो चाहिए ना कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। उसकी आवश्यकता ये है कि बिना उसके हम आगे नहीं जा सकते। एक कानून बना है म्यूनिसिपालिटी का, म्यूनिसिपालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, म्यूनिसिपालिटी हैज टू गिव बिल्डिंग परमिट, बट अंडर विच लॉ? यू कैन नॉट ऑथेंटिकेट एनीथिंग without having any reference to law. So under municipal corporation or some other, you can say a permit provision is added that you have to obtain building permit for construction of building in urban areas. That power is granted to Municipality Act, and also it's given in Schedule 12 of Constitution of our country. That is statute for power. I may say for power, but this is for construction, not power alone. वो परमिट के लिए हम चाहते हैं। आगे चले आप, तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में बहुत कुछ है। हमारे संविधान में एक विधायिका है जिसका नाम हम कहते हैं लेजिस्लेचर। वो बॉडी जो नियम कानून बनाती है हमारे लिए, और उसमें हमें शामिल करते हैं सबसे ऊंचे लेवल पे लोकसभा, जो पब्लिक का हाउस है, आम जनता का हाउस है, लेकिन जनता उसमें जाती नहीं है, जा नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर एक बाइंडिंग आ जाती है, एक रेस्ट्राइंट आ जाता है। हक तो सबका बनता है, लेकिन वहां एक रिस्ट्रिक्शन है, आपको गर्मी में या सर्दी में ऐसे रहना पड़ेगा। वो भी हमें सोचना चाहिए। दूध पीते हैं लोग रात को, इसलिए पीते हैं कि एनर्जी रहे बॉडी में और हेल्थ खराब ना हो जाए। उसके बाद हम देखें कि ये जो नियम है, जो भी बनाए जाते हैं, जो बने हैं, वो क्या हमारी जरूरत के हिसाब से बने हैं या बस बने हैं? और बने हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आप कोई भी नियम पढ़िए उठा के, पुलिस का नियम पढ़िए, पब्लिक के नियम बहुत सारे हैं वो पढ़िए, इनकम टैक्स के कितने हैं पढ़िए। अब चलते हैं थोड़ा आगे। We'll move further from constitution. Constitution understanding is very, very complicated and too easy as well. If you want to just go through it, go through it. It's your interest. If you want to learn something, I will simply say it's not very complicated, but it's long, voluminous, you can say. It's long document. It's not complicated. If you understand English, fine. If you cannot understand English, you can read in Hindi.
I think that's available. I also bought one Hindi long back. भारत एक देश ऐसा है हमारा, our भारत, that is operating based on constitution. We are not operated in air, we are not operated in water, or we are not operated in Yamin. But we are being operated natively. Constitution which we give to ourselves is very, very powerful document for us. And we cannot allow this power to go. If you go through Constitution, first of all, you will find any articles in that. Articles are very interesting, you see. What these articles are. This is from 1 to 395, and these are giving many inputs to us. These articles are in many chapters divided, and we should briefly understand them if we can. And if you cannot do, that's also true, no problem. You cannot do it, don't do it. And let me see. Yes, I think I have this file, I can open it. This is Constitution of India. I'm just going to scan it and read for you. Constitution of India. Every time there's some note on that, leave that, and I'm going to read it directly because no need to waste your time. The time is very important, significant. Now, what's given in this? I'm just going to read that for you. That is Constitution of India. This is Union. Part 1 is Union and its territory. It says name and territory of Union, admission or establishment of new states, then formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states, laws made up under Article 2 and 3 to provide for amendment of first and fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. Then citizenship, it is part 2. Part 2 itself is citizenship, you see, which is Article 5 onwards to 11. And what does it say? It says citizenship, part 2. Citizenship at commencement of Constitution. Citizenship at commencement of Constitution. Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Right of citizenship of certain migrants to Pakistan. Right of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. Continuance of right of citizenship, Parliament to regulate right of citizenship by law. This is part 2. Means there are so many provisions of citizenship in itself. This means this is a kind of prime law equivalent to fundamental right. Part 3 is fundamental right. And what it says? It says definition, then laws inconsistent with or derogation of fundamental rights, then right to equality, equality before law, that is Article 14.
Article 15 is prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. So there are two important provisions. That is Article 14, equality before law, and Article 15, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. When we go further, Article 16, equality of opportunity in matters of public employment, and 17 is abolition of untouchability, 18 is abolition of titles. Then let's go for the right to freedom. It's in the same chapter, it's the protection of certain rights regarding freedom of speech, that's Article 19, and 20 is protection in respect of conviction for offenses. 21, protection of life and personal liberty. And 21A is right to education. Then 22 is protection against arrest and detention in certain cases. Right against exploitation, that is 23, prohibition of traffic in human beings and forced labor, and prohibition of employment of children in factories. After that is right to freedom of religion. Article 25 is freedom of conscience and free freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. And 26 is freedom to manage religious affairs. And 27 is freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. Then 28, freedom as to attendance of religious instruction or religious worship in certain educational institutions. Then is cultural and educational rights, protection of interest of minorities, right of minorities to establish and administer educational institutions. Then saving of certain laws, is 31A, saving of laws providing for acquisition of estates. Then validation of certain acts and regulations, savings of laws giving effect to certain directive principles. Then is constitutional remedies, right to constitutional remedies. I'm talking about fundamental rights, right? Remedies for enforcement of rights conferred by this part. Then 33, power of parliament to modify rights conferred by this part in their application to forces, etc. And restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in any area, and legislation to give effect to provisions of this part. Then part 4 is directive principles of state policy, because these are not mandatorily limited. Then fundamental duties, part 4A is Article 51A. Fundamental duties which have just defined in time. And then part 5 is union, that is executive, and is written president and vice president. About them, this written means President of India, definition, executive power of union, election of president, manner of election of president, term of office of president, eligibility for re-election, qualifications for election as president, conditions of president's office, oath and affirmation by president, procedure for impeachment of president, time of holding election to fill vacancy in office of president, and term of office of person elected to fill casual vacancy, vice president of India, then vice president to be ex officio chairman of Council of State, vice president to act as president or to discharge his functions during casual vacancies in office or during absence of president.
Election of Vice President, terms of office of Vice President, time of holding election to fill vacancy in office of Vice President, and terms of office of persons elected to fill casual vacancy. Oath or affirmation by Vice President, discharge of President's functions in other contingencies, matters relating to or connected with election of President or Vice President. Power of President to grant pardons and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Extent of executive power of Union, and then it is Council of Ministers, Article 74 and 75. 74, Council of Ministers to aid and advise President, and 75 is other provisions as to ministers. There is Attorney General of India, this is 76, and Conduct of Government Business, 77, 78. And I leave it. Parliament, this is now general, this is chapter 2. Constitution of Parliament, composition of Council States, composition of House of People, readjustment after each census, duration of House of Parliament, and all that, I leave that. Then I'll go to conduct of business, that's the disqualification of members, I leave it. Means I'm just telling you means what's wrong, what you should go through, power of place and immunities of Parliament and members and legislative procedures, procedure in financial matters and so on and so forth, general procedures and legislative procedures of President, Union Judiciary. Union Judiciary you know very well. Then states, and this is part 6, 5, 6 states, executive, and then it's going to states. So I'm just leaving all this behind to inform you what actually Constitution is all about. And importantly, if you go to, this is important one is here, 81, which is very significant in that case, which is linked directly to you. And 81 is composition of House of People. And 80 is composition of House, Council of States. And 79 is Constitution of Parliament. So 79 and 81 are very much linked. And there are so many provisions in this, and I read that also are not directly related to this one, to us. I'll move further on this because then I'm now I'm going to I'll briefly explain some points only. If you go to Article 1 that says India is name and territory of union, it is India, and that's Bharat, B-H-A-R-T, shall be union of states, and states and territories thereof shall be specified in first schedule. And territory of India shall comprise territories of states, union territories specified in first schedule, and such other territories as may be acquired. And Parliament may by law admit into union or establish new states on such terms and conditions it thinks fit. Sikkim to be associated with union, repealed by constitutions. Parliament may by law. Shall leave it now. No need. I'll go to further down. What I'm interested in to tell you what is citizenship actually. Part 2. Because citizenship is an issue these days, we have to understand it, what it is. It's part 2, citizenship, and Citizenship Act commencement of Constitution. It's Article 5 in Constitution. At commencement of this Constitution, every person who has domicile in territory of India and who was born in territory of India or
either of whose parents was born in territory of India or who has been ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India. You understand? भारत का नागरिक कौन? संविधान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। 5वां आर्टिकल संविधान का बोल रहा है। इस संविधान के शुरू होने पे हर वो व्यक्ति जो इस देश में है बाई बर्थ या किसी और कारण से इस देश की टेरिटरी में है, क्षेत्र में है, वो सब भारत के नागरिक हैं। उसमें कहा गया ए में, who was born in territory of India, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ, या बी, either of whose parents were born in territory of India, या जिसके माता पिता इस भारत के क्षेत्र में पैदा हुए, या who has been ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement, या इस संविधान के शुरू होने से पहले से जो आमतौर में भारत में 5 साल से रह रहे थे, वो नागरिक हैं। सारे के सारे नागरिक हैं, संवैधानिक नागरिक हैं। वो नियमित नागरिक नहीं, संवैधानिक नागरिक हैं, जो नियमित नागरिक से ऊपर होता है। इसमें लिखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 6, Article 6, rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Notwithstanding anything in Article 5, 5 में जो भी गया, कुछ भी कहा गया हो, a person who has migrated to territory of India from territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at commencement of this constitution. इस संविधान के शुरू होने पे आर्टिकल 5 के अनुसार जो भी पाकिस्तान की टेरिटरी जो बन गई थी वहां से भारत में आया, उस टाइम जो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बना था, वहां से जो भी भारत में आया उसको भारत की नागरिकता माना जाएगा। उसके बाद यदि he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935 as originally enacted, भारत के सरकार के कानून में, भारत का सरकार का कानून जो 1935 में बना था, उसके हिसाब से जो भी उसके अंदर परिभाषा दी गई थी, भाषा दी परिभाषित किया गया था, उसके हिसाब से जो भी भारत में पैदा हुआ उसको माना जाएगा। जो भारत में पैदा हुआ भारत के सरकार के कानून के हिसाब से 1935 के। या आप देखिए आगे बी में क्या कहता है, इन केस where such person has so migrated before 9th day of July 1948, 19 जुलाई 1948, 19 July 1948, in case where such person has so migrated before 19 July 1948, he has been ordinarily resident in territory of India since date of migration. अब आप देख लीजिए 19 जुलाई 1948 से पहले कहा गया है, in case where such person has so migrated before this date, 19 जनवरी 1948 से पहले जो आ गए और यहाँ जो आमतौर पे नागरिक है, रह रहे हैं यहाँ पे आमतौर पे भारत के क्षेत्र में, भारत की जमीन पे, वो भी होंगे नागरिक। In case where such person has so migrated on or after 19th day of July 1948, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आए होंगे, he has been registered as citizen of India, उनका पंजीकरण किया गया जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आए, उनको भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकृत किया गया उस अधिकारी द्वारा, by an officer appointed on that behalf by Government of Dominion of India on an application made by him therefore to such officer before commencement of Constitution
in form of manner prescribed by that government. 1948 19 जुलाई के बाद जो भी वहां से आए उनको नागरिकता देने के लिए पंजीकरण किया गया और उसके बाद बाकी प्रोसेस पूरे किए गए. Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in territory of India, बशर्ता कि वो यहाँ रहता ना हो, ऐसा व्यक्ति को पंजीकरण नहीं हुआ. No person shall be registered unless he has been resident in territory of India for at least 6 months immediately preceding date of his application. अब आइए दूसरे में 7 में आर्टिकल 7 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो चले गए पाकिस्तान, notwithstanding anything in article 5, 5 और 6 में जो भी कहा गया हो, notwithstanding anything said in article 5 and 6, a person who has after 1st day of March 1947 migrated from territory of India to territory now including Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India. ऊपर हमने 5-6 में जो भी कहा हो, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़ के पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया हो, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा. 1 मार्च 1947 के बाद जो भी गया वो नागरिक नहीं, बशर्ते provided that nothing in this article shall apply to a person who after having so migrated to territory now included in Pakistan has returned to territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under authority of any law, and every such person shall for purposes of clause B of article 6 be deemed to have migrated to territory of India after 19th of July 1947. So अगर वो वापस भी आ जाता है तब भी उसको कंसीडर किया जाएगा, ये कहने का मतलब है. और उसके बाद आर्टिकल 8 में आप आए, 8 में राइट ऑफ सिटीजन सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन residing outside India. Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents were born in India as defined in Government of India Act 1935, originally enacted, and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined, shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India in country where he is for time being residing on an application made by him therefore to such a diplomatic or consular representative, whether before or after commencement of this constitution in form and manner prescribed by Government of Dominion of India or Government of India. देखिए, आपको समझ आया? दोबारा बोल देता हूँ, better. Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India, as defined in Government of India Act 1935, as originally enacted, and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined, shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as citizen of India by diplomatic or consular representative of India in country where he is for time being residing on an application made by him. Therefore, such diplomatic or consular representative, whether before or after commencement of this constitution in form and manner prescribed by Government of Dominion
of India or government of India. Then persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. Article 9 है 9. No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired citizenship of any foreign state. आपने विदेशों की जब ले लिया सिटीजनशिप नागरिकता तो आपको यहाँ की नागरिकता कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, ठीक है. Citizen continues of right of citizenship. Every person, Article 10, every person who is or is deemed to be a citizen of India, every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of foregoing provisions of this part shall subject to provisions of any law that may be made by Parliament continue to be such citizen. Then Parliament to regulate right of citizenship by law. 11, Article 11. Nothing in foregoing provisions of this part shall derogate from power of Parliament to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to this. Nothing in this foregoing provision of this part shall derogate from power of Parliament to make any provision with respect to acquisition and for termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. ये मैंने बताया नागरिकता के बारे में बताया आपको, इतने सारे प्रोविजंस नागरिकता के तो हमारे संविधान में हैं और इन्हीं के हिसाब से उनको देना चाहिए थी, इन्हीं को अमेंड करते हैं, उन आर्टिकल्स हैं, तो जा सकता था आपने कुछ किया है. वेल अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा. लिटिल मूव फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3. फंडामेंटल राइट्स में इट्स टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड दैट्स अ ग्रेट वन. आर्टिकल 12 क्या कहता है? बार 1. In this part, unless context otherwise requires, the state includes government and Parliament of India and government and legislature of each of states and all local or other authorities within territory of India or under control of government of India. Article 13, laws inconsistent with or derogation of fundamental rights. Article 13(1). Yes, आप क्या कहते हैं? All laws in force in territory of India immediately before commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with provisions of this part, shall to extent of such inconsistency be void. ऐसे सारे कानून, नियम, अधिनियम जो संविधान के बनने के बाद, क्योंकि ये संविधान से पहले थे, यदि वह संविधान के मुताबिक नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है, तो इन नियम कानून का वो हिस्सा जो संविधान के हिसाब से नहीं है उसको इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, वाइड माना जाएगा. मैं फिर पढ़ देता हूं. All laws in force in territory of Bharat, India, immediately before commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with provisions of this part, shall to extent of such inconsistency be void. And इसके बाद क्या कहता है? 13(2) में, तो पहले 13(1) था. 13(1), 13(2) is state shall not make any law which takes away or abridges rights confirmed by this part, and any law made in contravention of this clause shall to extent of contravention be void. राज्य को हक नहीं होगा, सरकार को हक नहीं होगा कि जो ऐसा कानून बनाए, नियम बनाए, अधिनियम बनाए जिससे कि उसके छोटे हो जाएं ये नियम, अधिकार, या उनके अधिकार छीन लिए जाएं. इस अधिकार में, इस फंडामेंटल राइट में जो भी दिए गए हैं उसको सरकार को ऐसा हक नहीं है, और जो बनाएगी सरकार ऐसा नियम कानून उसको बिना मतलब माना जाएगा, वाइड माना जाएगा. आगे क्या कहते हैं? In this article, unless context otherwise requires,
लॉ को डिफाइन किया, लॉ क्या है, ए में 3A में लॉ में लिखा है लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्स ऑफ लॉ। नियम में सब लिखा है उसने। ऑर्डिनेंस लिखा है, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, ऑर्डर मीन्स आदेश, बाय लॉ मीन्स उपनियम, रूल मीन्स ऑर्डर, रेगुलेशन मीन्स ऑर्डर के हिसाब से काम करना, नोटिफिकेशन सूचना, कस्टम रीति रिवाज, और यूजेस कैसे किया जाए चीजों को लेके, ये इसमें दिया गया है। और लॉ इन्फोर्स क्या है? लॉ इन्फोर्स includes laws passed or made by legislature or other competent authority in territory of India before commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part of thereof may not be done in operation either at all or यहाँ कहते हैं जो कानून चल रहा है, शक्ति में है, वो सारे पास किए गए उस विधायिका द्वारा या उस अधिकारी द्वारा जिसको अधिकार था इसका भारत के राज्य में जब से संविधान लागू नहीं हुआ उस समय से, और उनको हटाया नहीं गया, उन कानूनों को लागू रखा गया, चाहे वो इस्तेमाल हुए गए हो या ना हुए हो, उनका एक भी हिस्सा इस्तेमाल ना हुआ हो, तब भी वो लॉ इन्फोर्स कहलाएंगे। संविधान से पहले जो थे आधिकारिक थे, किसी भी लेजिस्लेशन ने बनाया था, किसी भी अधिकारी ने बनाया था, जिसको अधिकार था, वो सारे रहेंगे, बेशक उनका इस्तेमाल ना किया गया हो, ये कहते हैं। And nothing in this shall apply to any amendment of this constitution under Article 368. अभी आते हैं राइट्स ऑफ इक्वालिटी, बहुत बात चल रही है इसकी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट्स आर्टिकल 14 States shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within territory of India. राज किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करेगा बराबरी देने पे कानून के सामने, और उसको उतनी सुरक्षा देने में जितने की इस देश के अंदर उसको आवश्यकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये तो है 14वां। अब 15वां क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। राज कभी भी भिन्नता नहीं करेगा नागरिकों में, धर्म के हिसाब से हो, रेस के हिसाब से, जात के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, जगह के हिसाब से, जहाँ पैदा हुआ उसके हिसाब से, या इनमें से किसी के हिसाब से आप मतभेद नहीं करेंगे। फिर नो सिटीजन शैल on ground only of religion, race, caste, sex, place or birth or any of them is subject to any disability, liability, restrictions or conditions with regard to। किसी को भी इस जगह पे, इस जमीन पे कि आपका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, आपकी जात क्या है, आपका सेक्स क्या है, जमीन कहाँ पैदा हुए, और या इनमें से किसी भी, उनको किसी बात की डिसेबिलिटी नहीं करेगा। जो फील करे कि मेरे को सुन नहीं रहा है कोई उसकी लायबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं, लायबिलिटी नहीं, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस विद रिगार्ड टू इट। एक्सेस टू शॉप्स, आपको दुकान में नहीं घुसने दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दुकान में घुसेंगे, पब्लिक सब जगह घुसेंगे, होटल में जाएंगे, आप वहां को रोकें, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट बी स्टॉप देयर। यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing ghats, etc. All that is included in this. So this is all, I will not say anything because already is there and we understand that. आगे इसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना, कुछ ऐसे नहीं पता लगेगा। If you go on reading this, you will find so many things and at now इसके बाद हम जाते हैं आगे, हम जाएंगे आपको यहाँ ऐसे राइट ऑफ फ्रीडम है 19 में, आर्टिकल 19, all citizens shall have right
have right to freedom of speech and expression, to assemble peacefully and without arms, to form associations or unions, to move freely throughout territory of Bharat, India, to reside and settle in any part of territory of India. This is 19 Article 19. Citizens shall have rights. These are rights. So Congress should bring this idea because there's no one in this party to listen. Congress should think of this and fight with government. People are into there. They must know there. चलो राइट टू फ्रीडम आ गया. अब आप देखिए राइट टू फ्रीडम क्या कहता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, to assemble peacefully and without arms, to form associations or unions, to move freely throughout territory of India, to reside and settle any part of India, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. My mouse is building for you. This mouse is building actually. गायब हो जाता है यार इसके ऊपर आते ही. क्या होता है इसको? तकलीफ हो रही है माउस को यार. बड़ी है तंग कर रहा है हमारा यार. क्या हो गया इसको? बदतमीज. आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कुछ और. अभी तो आप पढ़ सकते हैं खुद ही. इसके बाद खैर हम चाहते थे आपको बताना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में क्या कहना चाहिए, वो भी हमें देखना चाहिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहती है. आर्टिकल 74 है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या कहता है वो. मैं जा रहा हूँ. आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 74 है सब. There shall be a council of ministers with Prime Minister at head to aid and advise President, who shall, in exercise of his functions, act in accordance with such advice. That's it. ये 74 में है. और जो आप चाहते हैं सुनना, This is called executive power of union में है ये. And council of ministers को ये कहा गया है. और बाद में कहा provided that president may require council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and president shall act in accordance with advice tendered after such recommendations. So there shall be a council of ministers with prime minister at head to aid and advise president, who shall in exercise of his functions act accordingly. That's all is prime minister. Now I'll take you to article 81. I think 81. Yes, it is 81. It should be 81. I'll go to 81 and read that one for your benefit. 81. Composition of a House of People. Subject to provisions of Article 331, House of People shall consist of not more than 530 members. Well, at that time, कुछ भी लिखा होगा. Chosen by direct election from territorial constituencies in states. Not more than 20 members, etc. So this is your 81, which is a vote right. Actually, here you are voting. Subject to provisions of Article 33. Not more than a House of People shall consist of these people chosen by direct election. Chosen by direct election from territorial constituencies in states. It's not Prime Minister who is chosen by election. Only House of People is chosen by election. That is your right. You have to understand this point, which is very important. And if you go to further else, you'll find election commission issue. No, I'm not able to find that one. Election commission, and that is where election commission works for you. Anyhow, I find problem at this moment to find that one. I'll see later on, no problem. So what I said is this. I just wanted to bring to your attention what actually we are living in. We are living in this world. We are living in this world, which is very, very important word for us. We cannot deny this world. We cannot leave our powers. We cannot keep ourselves in darkness. And therefore we have to come out from our dark area.
We have to understand Constitution of India. We have to understand what we were in Government of India Act and what we were in Episode Act and we are here now. We have to think on. No one is God in this country. No one. All are equal. If Prime Minister, he has to work as Prime Minister. President is President. Public has to work as public. Court has to work as. Everybody is defined what are your areas of your scope. We have to understand our scope, that is most important. And if you don't understand our scope, it's not correct. And I will appeal to all young people, at least give some time when you are free, rather than wasting your time touring and roaming in restaurant and going with girlfriends, boyfriends. At least read something for your constitution that gives you. It's very significant to know about this. Our leaders know that people are not interested in knowing about constitution. That is the only reason that they ignore everything. Did you know about citizenship provisions? You didn't know. There are provisions. There was no need of this bill, which we call CA or CAB. This was not required. This was not required. We should not forget that these people were sometimes part of this country. These Bangladeshis and these Pakistanis, they were part of Bharat, India one time. So they could be granted citizenship if government wanted directly with some concern, but not making a new amendment to Act, Citizenship Act, just creating problems for people. Not required at all. It was articles in Constitution are giving you weight that, after all, you are sometimes citizens of this country under Government of India Act. There is ways to extend that citizenship to them without involving names of Hindu, Sikh, etc., ignoring Muslim, which is completely against spirit and letters of our Constitution. Letter and spirit in Constitution have been smashed, trashed. That is what is political point. Actually, Prime Minister wanted to place Hindus and keep Muslims separate. But the result has gone reverse. They have become interlocked now. Communities of secular Hindus and secular Muslims have come together, and this where Prime Minister and government are unhappy with. They should be like this, means they should fighting together, but they are interlocked together. Interlock against the strength against PM and against government. That they don't want, and that's why they are using police here in rules to beat these people. This was happening. This is not called democratic principle. Our PM is not acting as PM, is not working as PM, but a dictator. He's not worrying about constitution. He's not worrying about what should be done. He is abusing police. He is abusing all institutions just for his positions gain, just for political gains, just for having credit from public to support him, augment support. That is what PM is doing. That's not job of PM, but PM is doing like that. We have to understand this very well. And if you don't understand, we will lose. Certainly we will lose. Our country is great. We have to keep it intact and great and integrated one, according to the premise of Constitution. We have to do it. I'm happy that people are coming up on the streets and roads and opposing Government Act. But government is not able to digest that. They're excellent people. Arrest them, put them behind bars, put them in jail, put them in, take in person, leave somewhere. Is that called principled politics, principled action? No. A kind of crushing of public is being designed by government and by states. I'll take your property. You are involved in violence. Where is public involved in violence? You people are putting your people inside crowd and they are damaging properties. Your people. You have forgot your times when you did all that.
You have people your time. You were in a position to do every atrocity on public and you oppose government always. You आप अपना समय भूल जाते हैं जब आप करते थे, इतने सालों से आप करते आए, तब आप क्या करते थे? आप पूजा करते थे देश की, क्या करते थे आप तब? इसलिए जरूरत है, we have a need today that people of this country have to oppose in place of opposition parties, because opposition parties are inactive now. They have not been acting according to the requirement time. So people are in positions, those who want future of this country good, who want constitution to work continuously, they have to speak up. They have to raise their voice, raise their hands against government action. That is where we are, and we require that. With this, I close this, because Jai Bharat, thank you very much, Vande Matram. होश में रहें, जोश में नहीं. सरकार सारे गलत काम करेगी, उनको अपना चलाना है, हमको रोकना है. इतना ही याद रखना है. जय भारत, वंदे मातरम. जय संविधान.